everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host Kushalmehra. All right, today's podcast is on the Wire and Meta Saga. Now, I'll give you a brief background. If you think क्या कुशल भैया आप अभी बात कर रहे हो इतने दिन हो गए और अब आपको याद आया वायर और मेटा के बारे में ऐसे ही बात करनी चाहिए फॉर द रिकॉर्ड विच इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट विद द डिस्क्लेमर दैट इफ आई वाज दैट टिपिकल पर्सन हु वुड हैव थॉट कि चल अभी मसाला गरम है अब पेल दो एक हैशटैग मार दो the truth would not have come out and I would not have realized what the truth is and to talk about it I have with me Samarth Bansal. Samarth, welcome to the podcast. Thank you for having me, Kushal. So Samarth, this is your first time on the podcast, so I always request every time people come on the podcast for the first time I request them to tell my viewers and listeners a little bit about yourself. So please, can you tell everybody a little bit about yourself? Yeah, so I'm an independent journalist. I've been a reporter for the last 7 years. Started my career reporting for the Hindu, then worked at the Hindustan Times. For the last 4 years, I've been on my own, and now I run and publish an independent newsletter. It's called The Interval, and I see most of my work as what I call reported analysis. I do long form stories based on issues that I'm interested in, and most of my work spans, it's largely at the intersection of politics, tech, policy, society. It is no fixed theme, but these are the genres I'm quite interested in. So explain this this your journey is interesting, so I'm more interested to start off where we are. Wire ke paas pahunch jayenge eventually, but like ye, like in such a careerist society, I don't know how to say it, we are a very careerist society. Like हमारे यहाँ होता है कि Yeah. भैया पैसे कैसे कमाएं, and I'm not blaming this. I was the same. FYI, आज मैं podcast कर रहा हूँ. I would not have dared done it when I was like 20 something. In my early days, I would not have dared done it because opportunities ही नहीं होती थी और the long story short फटती है करने को. So I mean, what you're trying to do is you clearly were in a standard journalistic model, and from there you have gone into this long form style of writing, and what I would use the pop culture analogy, doing deep dives into something where you Yeah. do a deep dive into something and you study it. Like ये रिस्क लेने का गुदा कहाँ से आ गया? So I'll answer it briefly. So I think so. See, I by training, I studied mathematics and computing. So that's my background. And the reason I was hired by the Hindu is because I have like I can write software. I have data skills. So there's this whole trend of data journalism that exists right now, and it's kind of increasing. So like I hit the sweet spot because I used to be a journalist at campus. I used to write for the campus magazine. I edited it, so it was for me a very exciting opportunity to do like data work and writing to talk about public affairs. Now what happened, because like I never like aspired to be a journalist, or like I before becoming a journalist I knew no journalist, like I had zero idea about this world. So I approached this profession from first principles, like what is the objective of journalism, how this should be done. So I think I entered with an idea of what the work should be, and I think that's what I kept following. That I spent a year at the Hindu. I had a great time. I think my training at the National Bureau in Delhi really taught me like the 101s of this profession, like brilliantly. I'll give you one example. Once I wrote an adjective for an economist, renowned economist, so and so. Then my editor asked me that, who are you to give a certificate to an economist? You're a reporter, right? So just say the economist said this, which I thought like it's a small thing, but it matters. Small things like that, So these kind of things that I don't know what people learn in journalism school. I just learned stuff on the job, and I kept following it. After a point, I think 3.5 years into my, quote unquote mainstream media jobs, I just felt like the kind of work I wanted to do, I did not enjoy what I was doing in the newsrooms. So I went on my own. It felt like a risk in the beginning, but then I figured out, and I still believe that journalism really matters. And if you do good reporting and really write good stuff, people A will read you, and there will be other people who will pay you. So I think both of these kind of things kind of checked out, and that's where I am right now. Does that answer your question?
No, it actually, I can relate to it so much because when I designed this podcast, like I said, Yeah, the entire social media model basically seems to be that you find what is trending on Twitter or what is being discussed on mainstream media. Sometimes the former influences the latter, and vice versa, the latter influences the yeah, former. And then you just make a 10-minute or 15-minute outrage video on that, and you yeah, basically collecting clicks. And when I started this podcast, I was like, to hell with that. I'm not going to do that. I'm going to wait. And which is why today's discussion matters so much to me, because I could have easily done this wire meta thing when it was, garma garam and it was yeah. happening. But I did not want to do it because for me, like you said, the truth matters, and what really Yes. happened there. And I don't look at it from. I'm not saying I'm some because I actually believe neutrality itself is a sham. We all come from our Yeah, own prejudices, which is I why I agree. hate Indian journalists. They claim that they're neutral. I mean, when I had Shekhar Gupta, in fact, one thing I liked. Shekhar himself admitted कि नहीं हम लोग neutral नहीं होते हैं, and Shekhar Yeah, was honest on the podcast to admit that, which was refreshing to me at a personal level. yeah, yeah. But okay, now let's start with the entire wire and meta story, and let us start with the baseline, assuming कि कई लोग होंगे जो इसको सुन रहे होंगे and they actually did not know what happened. So could you basically explain the entire story now? Okay, sure. So, Kushal, this whole thing began with there's an account on Instagram called Cringe Archivist. This account is now also on Twitter, and now we know, like at the time, see, a lot of things have now been unraveled since the story began and what we now know. But I'm going to explain the story from going back to what we knew at the time, so that we can actually follow what happened. So this was an anonymous account which claimed to be run by a set of academics and thinkers, etc., etc. No one knew who these people were, but it's a small account on Instagram with few hundred followers. Few In September, one of their two, three of their stories were taken down by Instagram. The Instagram story, right after they posted. So they felt that the post has been taken down for no valid reason. There was one, the story about this person, worshipping an idol of Yogi Adityanath. That was the story that Instagram took down, and the reason given was nudity, though there was no nudity in the video. So this guy then emails the Wire, telling them that look, so and so post has been taken down. This is a wrong decision by Instagram, and will you cover it? So then I don't know. I think in 6th October, the Wire publishes the first story, which is a very standard content moderation story. I have covered tech policy. I've written about platforms. So the classic story that there is an account and a post has been unfairly taken down, and they are not responding to the user. So that was the story. मामला यहाँ पे खत्म हो गया. Then what happens? 4 days later, on 10th October, the Wire publishes a bombshell, which they say that while even the account, the cringe archivist, believed that this post was taken down by the algorithm, because the post was taken down within 2 minutes after the Instagram story was posted. They said that their reporting tells us that no, it's not the algorithm. In fact, Amit Malviya, the head of the BJP IT cell, reported that story. And because Amit has privileges under the Meta's cross-check program, which was revealed in the Wall Street Journal's investigation on Facebook last year, about, I mean, that's a whole separate discussion, but let's keep it to the point that Amit had certain privileges that any post that he reports on Instagram, without, like, he can just take it down. So he was basically had privileges to be the ultimate censor on the social media platform. That, and if you think about it, let's imagine that Amit has those powers. It is really problematic because then, you are giving, like, no one should have this power, right? As a user, like, मुझे कुशल का tweet अच्छा नहीं लगा या post अच्छा नहीं लगा, and I have the power that without any accountability, I can just take this down, right? So if that was true, it reveals that, and the Wire story only told us about Amit. So that tells us that, with the Indian government, the party, and Facebook, something fishy is going down, right? That the world's largest social media platform is basically favoring the Indian ruling party. So that became the story, that how problematic this is.
Now what happens? The story goes out, and to prove this, the wire says that they have what's called a post-incident report. So they publish a document which showed that uh, you can see it on the wire story on archives that Amit Malviya posted there, so no check needed, story taken down. Now, next day, what happens? Facebook's communications person, he tweets out saying that the story is false. Nothing like this happened. This guy was Andy Stone. And that's where things start like kind of exploding because this is not usual behavior, Kushal. If like I spoke to reporters who cover Facebook. So generally, the denials of these companies are very vague. They will say, "Oh, we don't want to respond," "Oh, the publication got it wrong." But this was a very specific denial. So when the denial came on Twitter, everyone was like, what is going on? What more we need to know? So this is happening. People are wondering what is happening, and Facebook had not given an official statement by then. I think in a day or two, The Wire gets back and publishes a story saying that this guy, Andy Stone, while on Twitter he's saying that this story is false, they have an email that reveals that the kind of the document is correct, and he's outraged within the company that how did this email get leaked. So this happens. Now that adds, another, like it's a great story, right? That the spokesperson of this giant tech company is saying something on Twitter, but behind the scenes is saying something else. So that adds more layers to the story. Then what happens? The chief information security officer of Meta comes and does a Twitter thread clearly denying that no such email exists, okay, which has been published by the Wire, and so and no such powers have been given to Amit, things like that. Then the Wire comes back again with a third story where they say that again these guys are lying, and they give some evidence that like supposed evidence that the email actually was sent and other things. Basically the Facebook's denial. They published counter evidence. So these were the three stories that were going on, and after a point, it kind of became confusing. That it's like, do you trust the Wire? Do you trust the Meta? How do you kind of understand what is happening? So while this confusion is happening, a lot of us had doubts about the story because there were clear red flags. Um, it became a big story in the US. Tech reporters in the US, they started engaging with what is happening, and that adds a very interesting angle to this discussion because these guys are like they're not really interested in the politics of India per se. They are interested in, okay, what is Facebook really doing, right? Because they cover Facebook, and so they just wanted to know the truth. And based on their own understanding of what happens in the US, how Facebook responds, they were trying to understand the situation. So we got some really interesting insights about this whole affair from outside India. All of this is happening, and then something like things blow apart because we get one crucial information, which is this. So there is this tech policy researcher Pranesh Prakash, who in the time this stories have been going on, he was poking red flags in the story on Twitter. He's been very public about it. So he got in touch with the editor of the Wire, trying to understand because he also knew him, Siddharth, to understand okay what really happened behind the scenes, trying to verify some of the things, and this is what came out. And it's like I think Pranesh did like I don't think he slept for those days trying to really uncover what happened behind the scenes. So this is what he found out. In the third story, where the Wire claimed that the email is correct and they have proof, they quoted two independent security experts whom they claimed had verified the some of the technical things that they had done behind the scenes, and they didn't reveal their names. So there were two screenshots in the story. The names of the security researchers were hidden, but they said, look, we can't disclose their names, but look, we have the emails. People have verified our research. Pranesh found out one of those guys. Siddharth gave him the name. Okay. And then Pranesh independently contacts this person. His name is Kanishk, and asks whether he had sent that email to the Wire or not, confirming or what should I say, verifying the reporting process of Devesh. Devesh is one of the reporters on the story, and Kanish finds out no.
he is not the person who had sent this email. That email is fraud. And um, that's it. That's it. That happens. And it's everyone is confused so far what is happening. And now we know that this email was fake. And the moment you know that, layer by layer, you start seeing that there are clear problems with the Wire story. So Kanishk, like they are already informed the Wire that, this so and so has happened. You should know this. The Wire begins an internal investigation. Kanishk goes out in public, tweets about it, and we know that this whole case really didn't have any standing. So I'll stop here for now, but I just wanted to give you the series of events. There were three stories. There was a lot of back and forth between the Wire and the Meta, and this ultimate revelation about forgery, about at least that one email. Now, in retrospect, I wrote analysis of this piece, like what really went wrong, but that's like post-facto analysis. But this is the sequence of events. Now, what's fascinating over here is because there's another story that you have written about. That is what the Tek Fog story, Tek right? Fog. Yeah, yeah. Yeah. And I don't know how to say this, but that also involves the same journalist, ironically. One of the journalists is the Yeah, same. yeah, And you did a deep dive in that too, and you found problems there too, right? yeah. Yes, yes. Yeah, So that because story, yeah, sorry. no, please go ahead, go ahead. So what the hell happened there then? Because when I was reading both those pieces, I was like, there is a pattern here. I don't know how to say it. Yeah, There's a yeah, pattern here. yeah. So the Tech Fox story came out in January. I think yeah, that was January this year. And again, TLDR, the story basically said there is a super app that the BJP has created. It can like create accounts on social media very easily. It can delete accounts. It has automated trolling. It has automated the spread of disinformation on the platform and some magical powers that this Tech Fog app that the BJP has developed, they have it. Now, it was like supposedly a 2-year investigation, a 3-part series. Now, I think like I have covered like platforms and I am an engineer by training. So I can tell you, Kushal, day one I read the story. It was published in the evening. Day one, right? I knew like the story doesn't stand. Day one I knew it. Okay, because like as a so just to give you context, when I read any news story, I read it like an editor, the way an editor reads my story, right? So you parse every statement and see, okay, this is a statement, what is the evidence provided for the statement? And that's how anything I read to see whether this information makes sense to me or not. So when I read a story with an editor's eye, I saw holes. So story one happened, story two happened, story three happened. Then I spoke to these guys. I interviewed the journalists, telling them that, I'm writing a critique of your story. So we had multiple Zoom calls. Okay. Like one Zoom call and then follow up phone interviews. And then I wrote a critique showing that like all the methods they had used, okay, to make claims, they don't stand journalistic scrutiny. Okay. Whenever we do investigative reporting, there are, ways in which you establish claims. And I think the stuff that the Wire had used, they did not pass the test. And the interesting thing about that story, because it was so technically complex, there was so much jargon that I think, most people didn't really understand what was going on. It was, you sometimes get fascinated by, fancy data or fancy tech, and you just tend to believe that सही किया होगा मतलब इतना कुछ मेहनत करी हाँ, है तो कोड वो लिखा जो है तो गिफ है सही ना, होगा. इतना अच्छा बोले हैं, समझ में नहीं आया मगर सुन के बहुत अच्छा लगा. Right, kind of that thing. I think that is what happened. That people just trusted that sahi काम किया होगा, but if you look at it from a technical lens, and that was the story, saying that it didn't follow It like sounds like story further. postmodernism of the tech world. Yeah. So just to, I think the similarities between the two is basically that I think what really happened was, see, in any newsroom, and I think what makes journalism different from other forms of communication is the layer of editing. Some like the editor has a very important role. See, as a reporter, मैं अपनी story से हमेशा attached रहता हूँ क्योंकि मेरी कहानी है, मैं लेके आया हूँ खबर, right? Then the editor has to come and tell me कि boss, तू यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है. You are telling me 10 things. You can't prove 8 things. So put those 8 things out. Say 2 things, but say 2 things with rigorous evidence. That's the job of an editor, right?
वो जो होते हैं ना, इट्स लाइक द रेड टीम, कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, बट जो आप पब्लिश करो दैट शुड बी रिगरस इनफ. तो वायर में दोनों स्टोरीज में ये हुआ दैट दिस माय एनालिसिस that the layer of editing was totally missing, and you fall for confirmation bias because the stories are so fantastical, so magical, that you don't put in that enough effort, add confirmation bias, and you have these two problematic stories. Yeah, and this is what now let us get into. So I'm actually grateful to you that you did such a good job in narrating these two stories. And now we look at patterns in reportage. And Yeah. by the way, before anybody accuses me, I am not trying to make it that it is a uniquely left-leaning media thing. This is a human thing, and Yeah. you see this happening across the spectrum in India. The level of pardon my French bollocks that I observe in the name of journalism in India. Sometimes I feel like मेरे बाल वैसे भी कम है, मतलब मैं वो भी खींच लूं मेरे बाल, मतलब क्या क्या रिपोर्टाज होती है, which is why I love Substack for the record, because I have genuinely stopped watching mainstream news. I can't stand it anymore. But let us do this. Like, yeah, now I want to talk about the larger issue. What is the Yes. purpose of journalism? Yeah. Yeah. So see, from my vantage point, uh, journalism's first obligation is to the truth. We are in the business of seeking truth. That is what we do. Others can have different definition. This is what it is Okay. for me, and I think So a lot of other people I, share I'm that. I'm going to go full Socratic on you. What is the truth? Please, what is the truth? Okay, you told me you. I am not a philosophy graduate, but let me tell you from a perspective of, or let me put it this way, because rather than making it giving an abstract answer, let me just tell you what I think is the job of a reporter, like what I do, and I think to that we can answer the question, what is the truth? So I don't think I can claim or anyone can claim that I know the ultimate truth. I think what journalism can do is to follow a rigorous process to get as closer to the truth as possible. Now, when you say truth, right? See, some things are black and white. Some things are clearly black and white. Like, for example, a road accident happened. Okay. Now the road accident happened. Someone was driving the car, right? Someone got hurt. Someone got, like was killed. That is black and white truth. Now you go one layer addition. Now you say, why did this person who was driving the car, like why did that happen? When you get into the why, you can think about, was it an accident? Was it a murder? Was the person, did they drink? Like all sorts of things, right? That's where things can become speculative. So there, again, there could be quote unquote truth, like something a hard fact, but it becomes slightly difficult for a journalist to establish those things. So there are layers to this thing about what the journalistic method can achieve. For example, I always say that it's very hard sometimes to answer why someone did what they did. Like I can't read Kushalmehra's mind right now, right? You can say something, but I know what you said. So I'm just trying to say that there are distinctions even when you talk about quote unquote facts or truth, but there is a process, and for different degrees of claims, there is a different level of evidence. So which is why in one of my stories, the Tek Fog story, I wrote this statement that extraordinary claims require extraordinary evidence. So my job as a reporter is to follow a rigorous process, an honest process, a process that you can trust, you can follow, and say Samarth did X, Y, and Z to make this claim. So that is all I can do. I don't think उसके beyond जर्नलिज्म कुछ कर सकता है. हम इतना ही कर सकते हैं और उतना ही हमें आई थिंक मतलब उसी दायरे में रहना चाहिए. It's not something magical, but there is a power to this method. You know what I find, and here's where I'm coming from. I'm not Yeah, a journalist. I'm just a yeah. guy who looks at things and thinks. Like Hmm, hmm. I try to read up on human biases, first principles, logical thinking, rationality. That's my thing. I always try to look Yeah, at things in that way. Now, when I was just hearing look, I was completely unaware of the Tech Fog story because I could not care. But
Like the first thing when I hear the story from you, a Hmm. rational person, the first thing a rational person would be like, ये लोग ने अमित मालविया को मोगैम्बो बना दिया है. मतलब इतना तो पावरफुल कोई नहीं हो सकता है. So that that was the first red flag for me. Yeah, yeah. आई मीन अमित मालविया इतना मैकियावेलियन है और इतना वो पावरफुल है कि उसने एक बटन के क्लिक पे आई मीन सीरियसली ये सब कर दिया. मतलब हद होती है कि आप अगर आई एंड लुक आई एम नॉट सेइंग दैट others will not do this and this will not be repeated in the future. मगर यार Yeah. this is elementary. like आप एक इंसान को इतना पावरफुल प्रेजेंट कर रहे हो और ये मिस्टेक है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन मिस्टेक. सो आई विल गिव यू a very common thing. Like people Hmm. Hmm. hold two diametrically opposite views. They say the government is super powerful, super conniving, conspiratorial to the extent that they are involved in everything. And then the same person will say the government is good at nothing. Hmm. If the government is good at nothing, how the hell it is so diametrically opposite in other side? Like there, okay, I get it. The government is powerful and it can get things done, but it's not that powerful. So, like, don't you think somewhere in this entire story, Hmm. the editorial team, and I'm Yeah. not taking a specific name, मेरे को तो नाम भी नहीं Yeah. मालूम है उनकी पूरी एडिटोरियल टीम की. I could care less who the person is over there. Hmm. My point Hmm. is यार एक एडिटर नहीं होगा, ये मल्टीपल लेयर्स होते होंगे ना न्यूज रूम में. एक सीनियर एडिटर होगा, एक जूनियर एडिटर होगा, या एडजेसेंट एडिटर होगा. पता नहीं उनके टर्म्स क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता, मैंने तो कभी न्यूज रूम चलाया नहीं. और पॉइंट है कि ये मेरी कंपनी में अगर मेरे पास कोई आएगा और मुझे बोलेगा कि सर ऐसा हुआ है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा भाई इतना पावरफुल कैसे हो गया. Yeah. What were the editors doing? Yeah. I mean, that's the question, right? I mean, I think I don't know the internal structure of the wire, but I think in both the stories that I've written, that is the point that I've made, that it's an editorial blunder. That it clearly shows that there are serious problems with the way the newsroom is structured, the way stories are being processed. There is something, if these kind of things are leaking out in the sense that going through a filter, that means you have diluted the editorial filter. And the moment you dilute your editorial filter, like these kind of fiascos will happen. It's just that, uh, I mean, it is, I think, and let me put it this way, that a lot of us journalists, okay, who like we were baffled. Let me put it this way, that like how could this happen? How could this happen? Uh, and we spent like hours internally chatting to just understand that this is journalism 101, right? Like, how could this get through? So, I mean, I can offer like reasoning, like it could be clearly that, it confirmation bias is like the most obvious explanation, where you think about like the meta story, right? Like, वो believe करना वैसे कितना आसान है अगर आप सोचो कि, see, I don't know about you, Kushal, but मेटा को ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है. This company, if you look at their track record, it's like very problematic. The kind of things they have done in the past, okay, things that have been revealed repeatedly about the things they have hidden. So trusting anything that comes out of Meta for any tech reporter is very hard because of what we have seen in the past. Then uh, let's talk about the current government. Okay, यहाँ पे we could have different views, but I have written about this. Like I genuinely believe that at this point, it's become harder for journalists to report under this. It has always been, journalists always have a tension with anyone in the power. There are things that previous governments have done, but this is a time where things have become much more difficult. Okay, and there is this, things about dissent, about online speech. All of these are like complicated debates, but I think that we are at a time when things are becoming harder. Now you add both of these two together, that you have this tech company and you have BJP. Now they come together, right, and are trying to create this Orwellian censorship kind of a model. So you see that, and if you so hardly believe in both of these things, then you say कि अच्छा सही ही होगा.
You see what I'm saying? Because it's not hard to believe that it could be true. But, and that is where the job of a journalist comes in, because you don't see कि अच्छा सही होगा. You ask the other question. What are the reasons why this could be wrong? Right? To get to the truth, you have to like eliminate other possibilities. और अगर आप ये सवाल पूछना चालू करोगे, that's one way to fight the confirmation bias, right? क्योंकि आपको ये सवाल पूछने पड़ेंगे. तो ये सवाल पूछे ही नहीं गए. और अगर आप ये सवाल नहीं पूछ गए, then, and this is the difference between a regular journalistic failure and this, you enter the world of fabrication, which is what happened in this case. You see the distinction. कल को कुशल मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूं जिसमें मैं गलती कर दूंगा, like I am openly acknowledging mistakes तो देखो होती हैं, right? उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मिस्टेक क्यों हुई. किसी ने मेरे को झूठ बोल दिया, मैंने उसको अच्छे से असेस नहीं किया, मेरे को 4 लोगों से बात करनी चाहिए थी, मैं 2 लोगों से बात करके मैंने आर्टिकल लिख दिया. ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर आई कैन से मेथड मेरा फ्लॉड था. इस केस में फैब्रिकेशन हुआ है, राइट? सो पकड़ा कैसे नहीं गया, वो सवाल हमें पूछना चाहिए. और वो यही दिखाता है कि एडिटर लाइक बेसिकली काइंड ऑफ देयर वाज नो एडिटिंग, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी what an editor is supposed to do हुआ होता, तो these stories would not have been published. Now, let us discuss this further. Now, I'll tell you, it's ironical, and this is why echo chambers create problems. The one thing I have consciously done in my life is I always go and read the left. I always go and read the left. I make it a point, I go and read them. No matter how much of a cognitive dissonance it's creating in my brain, I will read them. Yeah. Yes. Let me tell you with full confidence that this is my and by the way, there have been now slowly but surely studies aani shuru ho gayi hai. The left actually has stopped reading the other side, and there is a reason for that. And let me lay down my case to you, and maybe you'll get it because you're a rational guy. The left has created a problem of citation loops, and I'll explain how. So क्या होता है? See, journalism या ये सब है ना, ये सब एक larger rubric of social sciences में आता है. Social sciences by design, right from the recruitment in the academia to the dissemination in the job market, has a humongous left-wing bias. Humongous. ठीक है, आप studies after studies cutting across the developed world or the developing world, जो आपको शब्द यूज करना है, फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, सन. The point is, आप डिपार्टमेंट्स में जाके स्टडी करोगे, 95%, 90%, 98%, यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी, outside of hardcore economic policy departments, which is the only exception to the norm, जिसमें 50-50 है, या हार्ड साइंसेस. ठीक है, सारे के सारे आपके लेफ्ट लीन करते हैं. अब जब आप लेफ्ट लीन, हाँ, मतलब ये जो स्टडी इंडिया में अब्रॉड और लाइक अब्रॉड हुई है, सारी अब्रॉड हुई है. एंड यू नो व्हाट, आई विल शेयर सम ऑफ दोस लिंक्स विद यू. इट इज अ फैसिनेटिंग स्टडी. एक कैनेडियन ने किया था ये, कि ही बेसिकली लुक्ड एट डिपार्टमेंट्स लाइक जॉनथन हाइट इसके बारे में बोल चुका है. जॉनथन हाइट हिमसेल्फ हैज स्पोकन अबाउट इट, द हेवी एकेडमिक बायस व्हिच इज लेफ्ट विंग. अब इसके see what happens is people think about first order effects, but if you're a good thinker ना, you don't think first order, you think second order, third order effects. इसके सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स कहाँ आते हैं मालूम है? कि आप जो मटेरियल जनरेट कर रहे हो, आप मटेरियल जनरेट कर रहे हो ना, आप किसको पढ़ रहे हो? आप सिर्फ लेफ्ट विंग पढ़ रहे हो, क्योंकि जनरेट कौन कर रहा है? सिर्फ लेफ्ट विंग कर रहा है. तो आप सिर्फ एक दूसरे को साइट कर रहे हो. आप एक दूसरे को साइट किए जा रहे हो till the extent see, I was in North America for 4.5 months and I had this serious, मैं नाम नहीं लूंगा, some think tanky, मैं टैंकी बोलता हूं अभी, इनको think tank नहीं बोलता हूं, think tank का है जो मेरे को बोलता है मोदी ब्राह्मण है. मेरा मन कर रहा था मैं जाके मेरा सर मार दूं दीवार पे. मैंने बोला मोदी ब्राह्मण कब से हो गया? मतलब तुमको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है इंडिया के बारे में और तुम वहां बैठ के ज्ञान पेल रहे हो. Or I could have easily fought with that person, but I did not, because I was like, I started pitying that person. And now I actually look at the left now from a place of sympathy. क्या हो क्या गया इन लोगों को? They only read themselves. देखो आप है ना, अगर अर्नब गोस्वामी को चिल्लाते हुए सुन रहे हो ना, आप राइट विंग रिसर्च नहीं कर रहे,
I say this with all seriousness. I have nothing against Arnab. Kudos to him. उसने पैसे बनाए, उसने ग्रो किया अपनी लाइफ में. बेस्ट ऑफ लक टू हिम. आप अगर टाइम्स नाउ के हैं हूं को देख रहे हो ना, आप राइट विंग नहीं पढ़ रहे हो. मैं एकदम सीरियस कह रहा हूँ एक बात. आप राइट विंग में भी स्कॉलर्स हैं जो सीरियस रिसर्च करते हैं और प्राइमरी रिसोर्सेज शेयर करते हैं. मैं लेफ्ट विंग वालों को बोलता हूँ ना, नाम लो सीरियस स्कॉलर्स का, नाम नहीं ले पाते क्योंकि वो पढ़ते नहीं है. और आपने अगर बेसिक रिसर्च की होती थी ना, तो सेंस द रूम, राइट. अमित मालविया को राइट विंग सुबह से शाम तक, एंड दिस इज नॉट मी, आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई आदमी बेसिक ट्विटर फेसबुक सर्च भी कर लेता था ना अमित मालविया के उधर, उसको सबसे ज्यादा गालियां राइट विंग देता है कि तू निकम्मा है, इतनी सारी एंटी बीजेपी स्टोरीज आती हैं, तू कुछ कर नहीं पाता, तू यूजलेस है. और और एक ऐसा आदमी जिसको पिछले 8 साल से एक के बाद एक गालियां पड़ रही हैं, आपने उसको मोगैम्बो बना दिया. इसका ये एक ही चीज दर्शाता है कि आपने पढ़ना बंद कर दिया है. और दूसरा क्या हुआ है, आई सॉ दिस एंड आई यूज दिस. सी, आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स कि I checked my biases when I started following American politics because I could give a shit about who won in America. मेरे को क्या लेना देना, ट्रम्प बनता है प्रेसिडेंट की, बाइडन बनता है, मेरे कौन सा चाचा मामा है, मैं उधर रहता भी नहीं हूँ. मगर मैं उनकी पॉलिटिक्स फॉलो करने लगा. तो मैं क्या होता था, मैं डेली वायर पढ़ूं, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ूं, फिर मैं जाके न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ूं. फॉर द रिकॉर्ड में एक भी पैसा नहीं देता उनको, क्योंकि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा उनमें से. ये भी मैं साथ में बोल रहा हूँ, तरीके होते हैं पढ़ने के उनको, मगर मैं जाके सबको पढ़ता हूँ. और उससे क्या हुआ कि मुझे मेरे बायसेस समझने लगे, मैं कहाँ गलती करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग. क्योंकि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था वो ट्रम्प उधर ट्रम्प हग रहा है कि बाइडन हग रहा है, मेरे को क्या करना है. मगर वहां से मैंने समझा कि जब ट्रम्प जीता, these people lost their collective shit. CNN, MSNBC, and many other people, they lost their collective shit. Now, I agree. I don't like Trump myself. I find him so off-putting. Like, he's just yuck. But the point is, there is Trump, the personality, and then there is the Trump government policy. Both are two different things. Now, when I saw that, and I was like, ये हो रहा है यहाँ पे. They are so obsessed with their Modi hatred. They are so obsessed with it that I was like, ये कभी सच बोल ही नहीं सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये दे स्टार्ट विद द लाइन दैट आई हेट मोदी. लाइक, and this is not me trying to get to you, because believe me, I'm actually fond of you because you are genuinely trying to seek the truth. I mean, just say you made a statement, right, कि under this government censorship बढ़ी है. मगर अगर if I want to quantitatively prove it, right, how do I prove it? I would, अभी मैं आपको नहीं होगा. अब मैं आपको सिंपल बताता हूं. मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं. एक एग्जांपल से मुझे लेफ्ट विंग गालियां देगा, एक एग्जांपल से मुझे राइट विंग गालियां देने वाला है. सो मैं दोनों की गालियां खाने वाला हूं. आज से कुछ साल पहले लिंचिस्तान, ये शब्द, this had become a narrative. Now, what was Lynchistan? They took, see, how do these studies come? You just have to look at their methodology. They cull newspaper reports. That's all they do. They take out newspaper reports and they create a narrative out of it, right? Now, what did they do? They selectively picked English language newspapers in that study. Selectively. अब मैं आपको बोलता हूं, मैं रैंडमली अगर मैं हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को पकड़ना शुरू हो जाऊं ना, ऐसा लगेगा सिर्फ मुसलमान हिंदू को मार रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इस देश में. ठीक है. और मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ना, ऐसा लगेगा सिर्फ हिंदू मुसलमान को मार रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इस देश में, या वो कभी रैंडमली क्रिश्चियन को मार रहा है. द पॉइंट इज, द ट्रूथ डज नॉट गिव अ शिट अबाउट व्हाट इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर. यू शुड नॉट हैव हैड अ स्टडी लाइक दिस. अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. देयर इज अ ग्रूसम मर्डर दैट हैज हैपेंड अ फ्यू डेज अगो. ठीक है. शुरू हो गया राइट विंग, देखो ये वो. आज मैंने कुछ नहीं किया. मैंने मेरे कुछ दोस्तों को, मैंने रैंडम गूगल सर्च की. मैंने सिर्फ 4-5 शब्द सर्च किए. मैंने बोला बॉडी चॉप्ड इनटू पीसेस इंडिया. मैंने लिटरली ये गूगल सर्च किया. साला गूगल सोचता होगा किस किस्म का कमीना आदमी है, ये क्या सर्च कर रहा है. मगर मैंने सर्च किया और मैंने केस निकालने शुरू किया. ठीक है जी, गे बंदे ने बॉडी चॉप इनटू पीस की, ट्रांस मुस्लिम ने बॉडी चॉप इनटू पीस की, लेस्बियन ने बॉडी चॉप इनटू पीस की, हिंदू ने बॉडी चॉप इनटू पीस की, मुसलमान ने की, अच्छा एक मुस्लिम औरत ने भी कर दी यूजुअली. सो एक ही पैटर्न इस पूरे शगुफे में मुझे मिला कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ दीज हीनस क्राइम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल क्राइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हीनस क्राइम्स,
is male on female. That's the only pattern you see. But आप दोनों साइड में ये देखोगे, जब बायस को सूट करेगा ना, और ये होता है प्रॉब्लम. इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जब हम ये करते हैं ना, तो सच कभी बाहर नहीं आने वाला है. इज माई See, I don't care if you vote for Modi or you vote against Modi. At the end of the day, we are living in India together. We are stuck with each other, whether we like it or not. सालो सबका भला होना चाहिए. पॉलिसी डिस्कस करो जिसमें सबका उद्धार हो. प्रॉब्लम हमारे देश की ये हो गई है कि हम उद्धार की बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं. So now I get into, and I loved your piece. Yeah. Sure, no, chalo, go ahead. Go. नहीं, आप खत्म करिए. Sorry to interrupt. Yeah. No. So I loved your piece which you wrote on a different way to think about Indian media. ये मैंने इतनी जो बकैती की है ना, because I loved that essay of yours. I actually, and I genuinely mean it. मेरे को इतना अच्छा लगा वो पढ़ के. So now let us talk about it as two people who might be on the opposite side of the spectrum, but we both care for our society. साला सुधारा कैसे करें इसका? पहले आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, ठीक है? जो अभी आपने बोला कि आपको नहीं लगता कुछ, लाइक मुझे ना ये जो फ्रेमिंग है अबाउट लेफ्ट एंड राइट, ये जो बाइनरी बनाया गया है, मुझे ये पोजिशनिंग ही बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक लगती है. बिकॉज आई डोंट, क्योंकि उसमें ना हमने, जैसे अगर हम अभी कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम दो बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी टू से कि समर्थ इज फ्रॉम द लेफ्ट, कुशल इज फ्रॉम द राइट, राइट? बट उसमें कितने सारे लेयर्स हैं. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, जस्ट टू गिव यू इनसाइट इनटू who I like, some really good journalists and editors who are actually at top papers, top, etc., जिनके नाम शायद लोगों को नहीं पता होंगे, बट और कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा तो उनको गाली पड़ेगी, ऐसा है, ठीक है? बट आई एम टेलिंग यू कि जब आप उनसे 1-to-1 मिलते हो, राइट, एंड आप समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा आप काम कैसे करते हो, आप अखबार कैसे चलाते हो, तब आपको डीप इंसाइट मिलता है, बिकॉज आपका हार्ट टू हार्ट हो रहा है, राइट? कि तो उसमें कुशल मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से लिबरल अखबार या लेफ्ट लीनिंग अखबार, राइट, और न्यूज आउटलेट्स, वहां पे कुशल एक्चुअली डिस्कशन होता है अमंग रिपोर्टर्स, अमंग एडिटर्स, वेयर वी टॉक अबाउट दिस स्टफ दैट वी हैव कंफर्मेशन बायसेस. जैसे एक एडिटर ने मुझे एक बार बात बोली थी कि कहते हैं कि अगर मेरा रिपोर्टर है, ठीक है, और वो सबको, देखो हम सब वोट तो डाल ही रहे हैं ना, हम सोसाइटी से अलग तो हो नहीं गए, तो आप मान लीजिए आप इलेक्शन कवर करने गए और आप चाहते हो कि ये पार्टी इलेक्शन जीते, ये पार्टी इलेक्शन हार जाए, राइट? लेकिन जब आप रिपोर्टर हो और आप ग्राउंड पे हो, तो जिस पार्टी को आप चाहते हो ना हार जाए, यू हैव टू टॉक टू 10x मोर पीपल हु सपोर्ट दैट पार्टी, एंड फॉर एवरी वन पर्सन यू स्पीक टू, जिसको तुम वोट डालने जाओगे, राइट? दीज आर द काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग सो दैट वी गेट टू द ट्रूथ. ओके, एडिटर्स देमसेल्व्स से दैट दिस इज आवर जॉब. एक एडिटर ने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली थी, उन्होंने कहा था कि अगेन वी आर इन द बिजनेस ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, बट आज के टाइम पे either we get an A+ on our job or we are irrelevant. अब बीच में ना वो मामला बचा नहीं है कि आप बोलो हमें B ग्रेड मिल जाएगा मुझे ट्रूथ सीकिंग में एंड आई विल बी फाइन. नो, यू हैव टू बी A+, बिकॉज अगर हम गलती करेंगे, गलतियां होती हैं, तो विल बी डिलेजिटिमाइज. तो ऐसे ही सोचो कि अगर गलती कर रहे हो तो आके जाके एक्सेप्ट करो एंड बी हम्बल. दिस ऑरा समटाइम्स दैट जर्नलिस्टिक, एक मोरल पेडेस्टल पे अपने हम को रख देते हैं कि मुझे तो सब पता है और तुम गलत हो, दैट मोरलिस्टिक सेंस विद द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू. आई थिंक वहां से प्रॉब्लम्स आनी चालू होती हैं. बट पॉइंट में ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ वो नहीं है कि मतलब पीपल इन द लेफ्ट थिंक लाइक दैट और पीपल इन द राइट थिंक लाइक दैट. बहुत सारे लेयर्स हैं. तो मुझे कभी कभार लगता है कि अगर हम डिबेट को ऐसे बाइनरी में रख देते हैं तो बहुत सारा नुआंस तो वहीं पे मतलब चला जाता है. तो आई वांट टू नो, लाइक आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने लेफ्ट राइट वाली terminology. No, I agree. Unfortunately, I don't believe the BJP is right wing. I just believe BJP is left wing, that is nativist. That's the only difference between the BJP and the Congress. If you do a from an policy economic analysis, perspective, like you're saying from the lens of economy, or even if you look at it socially, BJP is not anti-reservations. If you look at any policy decision, BJP increased the abortion limit. FYI, is that a left wing way of thinking or a right wing way of thinking? Like, what is it, right? BJP has increased reservations in India. BJP believes in welfareism. BJP basically believes in everything. The only difference between the BJP and Congress is actually at the civilizational level. What is the nature of Bharat?
Indian Is Bharat, it yeah. India or it is Bharat? And the Hmm. BJP says India is a continuing civilization of 5-6,000 years with the most Hmm. conservative estimate. And what the Indian left is saying is that no, India is a British construct. That's the only tangible difference between Indian political outfits if you look at it objectively. Baki har policy mein, in fact, I play this game with people that I remove the name of the party and I just read their manifesto randomly. मैं तुमको बोल रहा हूं Hmm. अगर राम मंदिर, काशी मथुरा, ट्रिपल तलाक और 3-4 कंटेंशियस सोशल इश्यूज हटा दो ना, डिफरेंस ही नहीं बता सकते पार्टियों के Difference. बीच में, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है. सो आई ऑलवेज क्लासिफाई इंडिया में दो पार्टियां हैं, द लेफ्ट एंड द नॉन लेफ्ट. आई डोंट से राइट विंग. अच्छा, ये तो मैं, okay. the non Okay. left, the people who are not with the left, that's all. Hmm. They are left wingers but they are not with the left. Me personally, I am genuinely right wing. Like, I believe in capitalism, Hmm. I believe in a small government. I'm a socially liberal person but fiscally conservative person. Like, I am right wing personally. I am very right. Hmm. Like, I am libertarian leaning. I just like to be left the hell alone. मेरे को अकेला छोड़ दो. मेरे, Hmm. लाइक, इंडिया में कौन प्रो फ्री स्पीच है? ना लेफ्ट विंग है जो जिनको हम लेफ्ट कहते हैं, Yes. ना बीजेपी है. Yes. कौन True. प्रो फ्री स्पीच है? कोई भी नहीं है. Right. Yes. Yes. Yeah. आज तो ये इश्यूज इंडिया की नहीं. प्रॉब्लम के हाल Yes. में, एक तो इंडिया का ओवरऑल डिस्कोर्स, अगेन अभी लोग मुझे गालियां देंगे, इंडिया का ओवरऑल डिस्कोर्स है ना, इट इज वेरी लो आईक्यू. आई डोंट नो हाउ टू से इट. मतलब गधों की जमात भरी पड़ी है और हर गधा दूसरे को गधा नहीं बोलता है, कुछ और बोलता है. सो दिस इज आवर डिस्कोर्स इन इंडिया एंड इट शोज इन योर कंटेंट लैंडस्केप. Right. Just I'm telling you, as a content creator, so YouTube has this option where it gives you research, like what are your subscribers viewing and what Okay. are people in general on YouTube viewing. यार वो देख लोगे ना जो लोग देख रहे हैं, मतलब शर्म ही आती है और कुछ नहीं आता. और मैं कुछ, एंड दिस इज नथिंग टू डू विद लेफ्ट विंग और राइट विंग. दिस इज Yeah. दिस इज जस्ट द ओवरऑल सोसाइटल स्टेटस. Yeah. एंड Yeah. Yeah. ये अगर मैंने बोल दूं तो लोग बोलोगे कुशल तू एंटी इंडिया. मैं एंटी इंडिया नहीं हूं, मैं तो इंडिया का सुधार चाहता हूं, मगर ये Hmm. रियलिटी है. और Reality. Yeah. इसके लिए दिस इज व्हाई अगेन, जो अ डिफरेंट वे ऑफ व्यूइंग द मीडिया. आई लव, सी, the story on Meta, Tek Fog, everything was amazing. But what stood out to me when I was reading your material was this a different way to think about Indian media. Like, you talk about this, right? You talk about the fact that the revenue model of Indian media itself is so messed up because a major chunk of the revenue comes from government ads, right? It does come from government ads whether we like it or not. Now, अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा, अब आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, कि अगर समझ लो कांग्रेस का कोई मिनिस्टर होता था, आपने उनको क्रिटिसाइज किया और सडनली एलआईसी Hmm. की एड्स कम हो जाती. सबने ये Yeah. स्टोरियां Yeah. सुनी हुई है. तो स्टेट गवर्नमेंट में भी हुआ है, तमिलनाडु में इतना हुआ है, हर जगह हाँ, हुआ तो है. Yes. दिल्ली यार गवर्नमेंट में इसका हुआ है. इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है मेरे को बताओ. कैसे चलाएंगे ये लोग न्यूज रूम? अगर ये लोग गवर्नमेंट से पंगा लेंगे और गवर्नमेंट की एड बंद हो जाती है तो ये चलाएंगे कैसे? Hmm. Yeah. So I think at this point everyone is trying to find the answer. अगर देखा जाए कि, एंड आई हैव स्पोकन टू सीनियर पीपल, कि देखिए इसमें ना दो एलिमेंट्स हैं. देखिए जो मैं स्टार्टिंग में भी बोला कि द रिलेशनशिप ऑफ मीडिया, लाइक जर्नलिज्म एंड पावर, हैज ऑलवेज बीन कंटेंशियस. मतलब उसमें कुछ एज सच कुछ एकदम से कुछ नया नहीं हो गया है कि आज हमें आके पता चला कि कोई प्रॉब्लम हो गई. वो हिस्टोरिकली रहा है. आप इंडिया में देख लो, आप ग्लोबली देख लो, तो वो तो है ही. इट्स ऑलवेज टफ इफ यू आर क्वेश्चनिंग समवन विद मोर पावर. दूसरी चीज जो साथ में हो गई है वो है इंटरनेट. कि इंटरनेट की वजह से आपका क्लासिक बिजनेस मॉडल क्या था कि अखबार के पास एडवर्टाइजिंग इवन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, राइट, दे यूज्ड टू मेक मनी. आप मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्टिल यू विल मेक मनी बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है. नाउ एज यू सी द ट्रेंड ऑफ things moving more digitally, where ad money goes mostly to platforms rather than coming to the publisher, तो आपके और sources जो हैं पैसा कमाने के, they are going away. So then you start thinking कि अच्छा subscriptions करेंगे, who will pay for the content. Then जो आपके traditional बड़े newsrooms रह गए, वहां पे there's still dependence on the government. कुछ कम तो होते हुए दिख नहीं रहा है because बाकी sources of revenue बढ़ नहीं रहे. Subscriptions आप देखो इंडिया जैसी कंट्री में, we are hoping कि कुछ बढ़ जाएगा, but
the numbers at this point are not like they're not inspiring at this point कि क्या आप उससे public good supported, and that's a debate आप कर सकते हो. I believe a lot of journalism is in the spirit of public good. उस पे लोग debate करते हैं, but that's where I am coming from. तो क्या can there be, and that's a question to we all of us should collectively ask, is it something that can actually make money? Can truth seeking make money or not? Right? Can we fund reporting? और अगर है तो what are the ways? So I don't think that we have clear cut answers that ये करके हो जाएगा. There is a discovery that is going on right now where people are trying models. And Kushal, what is happening at the same time is that the moment you try a new model, right, you also have to confront कि उस नए मॉडल के क्या challenges होंगे. जैसे एक challenge मैंने अपने इसी essay में लिखा था कि काफी लोग को ये लगता है कि if people start paying, if you are subscribers, right, then the media will become independent. But then you also have to ask the question ना कि independent from whom? अगर आप मान लीजिए आपके सारे सब्सक्राइबर्स आपको इसलिए पैसा दे रहे हैं बिकॉज दे अलाइन विद यू ऑन द लेवल ऑफ आइडेंटिटी कि तुम इस चीज के बारे में लिखते हो, राइट, यू क्रिटिसाइज एक्स पर्सन और यू क्रिटिसाइज एक्स आइडियोलॉजी, सो यू आर स्टैंडिंग अप टू दैट पर्सन कि ओके यू आर डूइंग दैट कोट एंड कोट मोरल जॉब. सो अगर आप वो करोगे देन हाउ विल यू, if you change, if you write a story that challenges them, then they will feel betrayed कि आप तो पलट गए. And that has happened. That has happened. एक कनाडा के अखबार के एक there's an editor, how can I forget his name? It's in my article. उन्होंने इसके बारे में लिखा था that this kind of subscriber pressure that comes on you. Andrew Potter. Andrew Potter, exactly. Andrew Potter is, I think, is very fine media thinker. तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, right, कि every time you try a new model, you also have to see कि how do you make sure that that model aligns with your fundamental job, which is truth seeking. और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये बोलूंगा कि we also have to start delinking. मतलब there is no one entity called journalism. मतलब उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, राइट? आप देखिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप बात करिए पॉलिटिकल जर्नलिज्म और बिजनेस जर्नलिज्म की, ठीक है? मान लीजिए मैं कल एक न्यूज वेबसाइट चालू करता हूँ which just does cover startups. Okay, मैं बोलूंगा I will do the most rigorous reporting on tech and business. अब आप कुशल, आप मेरी वेबसाइट देखेंगे, आप ये सोच सकते हैं ना कि अच्छा ये मेरे से साल का 3,000 रुपए मांग रहा है, ठीक है, ये वेबसाइट के लिए, और मैं अपनी भी कंपनी चला रहा हूँ. लेट्स अज्यूम कि पूरे साल में आपने मेरे को 1,000 आर्टिकल दिए. इवन इफ वन आर्टिकल, ओके, gives me an insight that I can use in my business, it is giving me an ROI, return on investment. So you can look at that relationship कि I am a consumer of information and I am deriving monetizable value. Now let's talk about political journalism or let's say civic journalism. वहां पे it's very hard to appeal to someone as a consumer, right? You have to appeal to them as a citizen. That ठीक है, जरूरी नहीं है कि if you get to know about the intricate policy details or what's happening inside the government or foreign policy, मतलब end of the day all of these things impact our lives, but I'm saying mapping आपको one to one ना दिखे, but you still believe that rigorous work is important to produce this, और उसके लिए the journalist has to be paid good money, right? Because if I'm not happy with the work I'm doing and I'm just figuring out how to pay my bills, how will I seek the truth, right? If I'm not getting, अगर एक स्टोरी करने के लिए मुझे 5 दिन चाहिए ग्राउंड पे, बट आपने मुझे या तो भेजा ही नहीं कि ट्विटर पे देख लो, या मुझे एक दिन के लिए भेजा, तो हाउ विल यू गेट द ट्रूथ? सो आई एम सेइंग दिस इज द प्रॉब्लम. एंड होता क्या है, मैं देखता हूं कि हम ये कोर प्रॉब्लम से जा ही नहीं रहे टू रियली फिगर आउट कि क्या करना है. एंड सो वी वांट टू डू ग्रेट थिंग्स, उसके लिए रिसोर्सेज है नहीं, तो हम छोटी चीजें करके उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं टू काइंड ऑफ you see what I'm getting, that this is it's a resource problem and we have to really think deeply कि कैसे इसको crack किया जाए. I don't know the answer, honestly, at I this point. honestly, I can relate to it, and I'll tell you why. I think one of the biggest reasons we struggle is our economy size is really small in India. Like, I'll tell you, there are a lot of people who are my members and they'll vouch for it. I have literally, I create members only content, right? I do my own thing where I look at religion, philosophy, which is my core area. So I will always tell my members that you give me money because you want to be challenged intellectually. You don't come here for comfort. I am a heterodox thinker. Like, I am a heterodox by nature.
Even my podcast itself is a heterodox school, Cārvāka. So they know what they're paying for, and I tell them upfront, I will tell you things that you find extremely irritating. I will tell Hmm. you things that will annoy the living daylights out of you, but you are paying me to get annoyed at times, and you are Yeah. paying me that यार जो भी है मैं इससे एग्री नहीं करता हूं मगर ये मुझे मजबूर करता है सोचने के लिए. Right. That's what I sell Yes. myself as a person who Hmm. creates cognitive dissonance. That's my Hmm. thing. And believe me, the struggle is real because there is barely any taker for it. I don't care. I will do this for the rest of my life because I had a previous avatar before this, and I can afford it for Yeah. the rest of my life with yeah, I will make less money than, let's say, a clickbaitiya on YouTube who just says aag lag gayi, barbad ho gaye, din lut gaya. It's okay, I can live with that reality. But the Hmm. Hmm. point Hmm. is, it's a personality trait also. My Yeah. personality is different, and yaar main sach batau, no matter how much and I've never even hidden it, I dislike the Congress. But when the Supreme Court released the killers of Rajiv Gandhi, Hmm. I was pissed off. That's my prime Yeah. minister. How dare you release the prisoners of my prime minister? And that Hmm. is me. And what I try Hmm. to give to my viewers and listeners is, अरे यार ऐसे बनो. बिकॉज अगर Hmm. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये देश भी नहीं रहेगा. और याद रखना, ये Yeah. सब कुछ जो मजे हम कर रहे हैं ना, इसके फंडामेंटल रियलिटी है. इसके लिए कुछ चीजों में मैं नेगोशिएट नहीं करता. इंडिया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिया Hmm. डेमोक्रेटिक स्टेटस, उसमें कोई Hmm. नेगोशिएशन नहीं है. कल को तुम बोल दोगे इंडिया को मोनार्की बनाना, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन. तुम कौन सी भी साइड Hmm. से आ रहे हो, किस साइड से आ रहे हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस बेसिक नेचर. और ये एंड यू नो व्हाई आई अप्रिशिएट यू केम हियर. मतलब मैंने वो जब वो लाइन लिखी तुम्हें ईमेल पे कि यार अच्छी बात है कम से कम तुम आ तो रहे हो मेरे से बात करने को, बिकॉज कोई बात ही नहीं कर रहे हम आपस में यार. हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से. Yeah. लाइक मैं तो Yeah. नाम ले रहा हूं, मेरा दोस्त है, ही इज इन द आम आदमी पार्टी. हम लोग का मतलब रूबिन मैस्करेनस, he is there on Twitter. Many people know Ruben. Like Ruben and I don't agree on multiple things. हम लोग अभी मिल नहीं पाते इतना क्योंकि Ruben पुणे शिफ्ट हो गया है. But the point is, यार हम लोग आज भी कुछ होएगा ना, so I'll reach out to Ruben and I'll be like, हरे कैसा है, मम्मी डैडी कैसे हैं, Hmm. and he'll reach out to me. यार बेसिक ह्यूमैनिटी लूज कर दी है क्या तुम लोगों ने Yes. Yeah. क्या कर रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? See, there Yeah. is always the ideologue. Like I always tell my followers, ideologue से बच के रहना. Because the Hmm. ideologue की existence ही है ना, वो चार आइडिया है Yeah. बस. Exactly. वो चीज करेगा तो कुछ नहीं होगा इसका. एंड देयर आर आइडियोलॉग्स एवरीवेयर. लाइक वो इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं. मगर बट टेल मी इन योर जर्नी, एंड दिस इज व्हाट फैसिनेट्स मी, बिकॉज you are doing the same thing in written journalism that I am doing in speaking things. And Hmm. believe me, the struggle is real. I can relate to this thing. But how do we explain to people, like I'll give you an example. Somebody has asked this question. So this person, and this is a very good point, is because one of your points in your piece that I am focusing on is the role of identity in news consumption. So this person has Yeah. asked this question, ki what is considered truth in journalism, and they use an example. Example is person A killed person B is the truth to some. But what Hmm. about the identities, the method, the motive? What about the? Identities, the method, the motive. वही जो हमने स्टार्टिंग में इसी बारे में बात करी थी, राइट, कि वहां पे दीज आर द थिंग्स दैट बिकम ट्रिकी. किसी के लिए वो बहुत ही ऑब्वियस होगा दैट से अ पर्सन फ्रॉम रिलीजन ए kills a person from religion B, right? तो someone can say motive religion ही है, right? But जैसे अभी आपने बोला, the reason could also be that a man killed a woman. So आप कौन से आइडेंटिटी पिक करोगे, right? तो वहां पे I think these things start becoming complicated. I will tell you कि रिपोर्टर क्या करता है. Okay, all of us know कि no, like I think any sane journalist will accept that none of us are objective and we have our biases. And that is precisely the reason why the method of what we do needs to be objective. You see the difference? Ki objectivity is not that the person is objective, but the method of reporting is objective. कि आपने क्या method use किया. So I think if, for example, to establish the motive of, like what is the motive, तो आप एक method follow करो, right? For example, you can say, I'm just thinking out loud here. You talk to four
people who knew the person. Okay, let's suppose they talk to you, they tell you कि अच्छा पिछले एक महीने से इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था, right? What was happening? Okay, do you talk to someone, the victim, कि उसके अराउंड क्या चल रहा था? You figure out what is the relationship between these two people. ये सब करके you connect the dots and maybe then something emerges. Then you can say कि मैंने 8 लोगों से बात करी, ओके, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लेके इस बंदे के पास गया, 4 लोगों से फिर मैंने ये बताया कि 8 लोगों ने मुझे ये बताया, अब मेरे को ये पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये बिलीव कर रहा हूं, राइट? दैट आई वुड से, अगर आप प्रोसेस फॉलो करके मुझे बता रहे हो कि ये मोटिव है, देन आई कैन से अच्छा, यू नो, फॉर मी दैट विल पास द जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस. बट मैंने कुछ भी नहीं करा एंड आई जस्ट सी कि अच्छा मैं आइडेंटिटी पे चला गया, तो दैट इज, यू नो, वेयर आई लाइक आई कैन से कि हाँ मुझे बिलीफ है, बट आई डोंट थिंक दैट पासेस द स्मेल टेस्ट ऑफ, नॉट द स्मेल टेस्ट, आई थिंक द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड जर्नलिज्म. तो अगेन ये ट्रूथ, तभी मैं ट्रूथ को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा मेथड की बात करता हूं कि मैं बस मेथड फॉलो कर सकता हूं, और मेरे को जो मेथड से मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा. उसके बाद तो वो इट्स अ फिलोसॉफिकल ब्लैक होल कि क्या है क्या नहीं है, बट मेथड तो कुशल हमारे पास है ना, जो मैं आपको बता सकता हूँ. सो दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम. Do you agree with this? Like, what are your thoughts? No, I actually agree. But one more thing that will create a problem, and you have actually touched upon this also. You call something the dynamics of information distribution, right? Yes. Explain this to everyone, because this is the biggest problem in what you have just said before. So, I'll request you, can you Yeah. please explain what is, because I'll tell you, मेरे को हर टाइम है ना, कोई सोशल मीडिया पे वो आपके फॉलोअर बढ़ते जाते हैं, कोई टैग कर देगा, why did you not speak about this? Yes, पहली yes, बात yes. यार, मतलब मैं क्या Yeah. वेला बैठा हूं मैं सुबह से शाम तक. Yeah. so No, so I think please yeah. explain this. Yeah, no, I think I think this thing about why didn't you speak about X, ये बहुत ही, इनफैक्ट फनी, यू नो, अभी जब मेटा वाला स्टोरी आया था, राइट, ये मेटा वाला, तो मैंने उसके बारे में लिखा था, तो समवन टैग्स मी एंड से व्हाई डिडंट यू स्पीक अबाउट टेक फॉग, एंड आई वाज लाइक, बॉस, एक्चुअली तुम जाके पढ़ो, लाइक the most detailed piece on Tek Fog is mine. So then I said, you know, please read. So I'm saying, okay, let's talk about the dynamics of information distribution. तो ये कुशल मेरे को realize हुआ when I was inside newspapers. तो होता क्या था, मैं हमेशा देखता था कि प्रिंट अखबार अगर आप पढ़ो, ओके, और मैं तो न्यूज रूम में बैठा हूँ, तो जब आप न्यूज रूम में हो तो आपको पता है कि आपके आसपास है लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या खबर छप रही है, राइट? सो आई यूज्ड टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पेपर एंड व्हाट इज बीइंग एम्पलीफाइड ऑन द इंटरनेट. Okay, what is the story that, you know, say kind of viral जैसे बोलते हैं ना, viral हो गई, and I started seeing a disconnect. I saw that the stories on which the newspaper is putting the most effort in the sense कि आपने अच्छे से रिपोर्टिंग करी, 2 एडिटर ने उस पर काम किया, आपने एक पेज दिया, नुआंस है, that is not really getting circulated. But you know, something छोटा सा जो आधे घंटे में हो गया होगा, that becomes like a big deal. So you start seeing that what you produce and what is amplified because of the internet, where you don't control what can get amplified because there are algorithms, you know, there is what people connect with, the things that as a journalist I can't control, as a writer I can't control. The moment I publish a story, I do not know what, मैं कोशिश कर सकता हूं कि ट्विटर पे गया तो मैं थ्रेड बना दूंगा, राइट? मैंने उसको किया तो उसके मैंने विजुअल्स बना, दीज आर, आप उसको ग्रोथ की टेक्निक्स बोल लो, राइट? बट स्टिल इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल. And the moment this additional factor comes in, you lose control to tell people about the universe of information you are covering, right? So if one thing blows apart and gets all the attention, people don't see the other thing that is happening. तो इसका एक पर्सनल एग्जांपल ये था, जब 2018 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी ब्रेक किया था अबाउट दिस न्यू आईटी रूल्स. डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन्होंने स्टोरी ब्रेक किया, मैं रिपोर्टर था, मैंने अगले दिन जाके उस पर फॉलो अप लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है, मैंने 2 लोगों से और बात करी, दिस इज अ स्टोरी. ये 1000 वर्ड का न्यूज स्टोरी था, और टीवी पे इस पे बहुत हल्ला हुआ था कि इंडिया चाइना बन जाएगा, ऑल ऑफ दैट, विच इज लाइक प्रॉब्लमेटिक डिबेट, बट उसको हटा देते हैं. हुआ ये, उसके 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो आर्टिकल चलाया, ओके, एंड मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में था. नाउ दिस पर्सन, ही वुड बी लाइक 21-22. वो उस ग्रुप में वो आर्टिकल शेयर करता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, एंड सेज why is the Indian media not covering this? They have bowed down against the government. मैं वो मैसेज पढ़ा, मैंने कहा यार,
हिंदुस्तान टाइम्स में इंडिया का यू नो पॉसिबल लाइक सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश अखबार है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन, मैंने आर्टिकल लिखा है, तो मतलब मैं लाइक आई एम द पर्सन फ्रॉम द मीडिया, राइट? लाइक this story has been written, it was discussed. It is just that wherever this person is getting their news from, it could be Instagram, it could be Twitter, this person did not see what the media had covered. So just because the information did not reach you does not mean that the information does not exist. So that is what I mean by dynamics of information distribution. That A, it is creation, कि आप पहले information create करते हो, फिर information distribute होती है, and then as a reader, as a viewer, as a listener, I consume it. तो तीन डिफरेंट चीजें हो गई. जर्नलिस्ट सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकता है, मतलब प्राइमरीली कि इंफॉर्मेशन क्या क्रिएट हो रही है. एंड कुशल, आई थिंक दिस लाइक उसका सोल्यूशन नहीं पता है, बट व्हाट द इंटरनेट हैज डन इज दैट इट इज अ डीकंटेक्चुअलाइजिंग मशीन. इंटरनेट, मैं कितना आपको बताऊं कि मैंने पहले क्या किया है, सो दैट यू ट्रस्ट मी, विच इज वाई आई थिंक वन ऑफ द, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद इट और नॉट, आपका एडवांटेज एटलीस्ट ये है थोड़ा सा कि इफ यू हैव इवन लाइक से 1000 people who follow you and know your background, what are the things you have said in the past, they will at least have context कि अच्छा कुशल अगर आज ये चीज बोल रहा है तो आई विल ट्रस्ट हिम बिकॉज उसने एक साल पहले कुछ और बोला था, राइट? बट if someone random person discovers you and they don't like you, then they will attribute you, कुछ motives डाल देंगे, इसका तो agenda है, and that I see, which is very problematic because you can't control it. So that's the problem of this whole creation, distribution, consumption. So not only is it a distribution problem, it like you now let us talk about the consumption side of it. So if I हाँ, was to ask you a follow up question, how yeah, does one become a smart consumer of yeah, information? information, yeah. So I think इसका point number one है, I think it's just critical thinking, right? I mean, that's like the base level thing that I think ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, right? But that's what I think all of us need to be smart consumers of information. We need to think critically. Like even newspapers I trust and I like, and my friends, मैं जब अपने दोस्तों का भी काम पढ़ता हूँ, right? तो मैं ये नहीं सोचता कि अच्छा मेरे दोस्त ने आर्टिकल लिख दिया तो सही होगा. I still read it with a critical lens कि अच्छा आर्ग्यूमेंट आया कहां से, राइट? इसमें फैक्ट क्या है, राइट? जैसे आपने बात बोली ना अभी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कि अच्छा लिंचिंग्स बढ़ गए क्या, ओके, तुम बोलो ये बात मुझे कि मैं तुम्हें डेटा दिखा रहा हूं, अगर डेटा दिखा रहे हो तो उसका मेथड क्या है, या तुम ये बोल दो कि मेरे पास डेटा नहीं है, ये मेरा बिलीफ है, राइट? देन आई विल डिसाइड, मतलब एंड आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है. तुम बोलो ना कि आई बिलीव दिस इज हैपनिंग, राइट? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, देन आई कैन असेस ऑन माय ओन एंड कि डू आई वांट टू ट्रस्ट योर बिलीफ और नॉट. जैसे कि व्हेन आई रीड अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, अब देखिए मैं कोई इकोनॉमिक्स में ट्रेन तो हूं नहीं, ठीक है, आई जस्ट बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, सो आई नो सम बेसिक्स एंड आई फॉलो. अब उसमें आप ये देखिए कि what has happened over the period of years is that I observe that who are those commentators, okay, who have been thoughtful in their analysis repeatedly. If someone is just towing the government's line, or if someone is just speaking against the government on every single thing, right? And there's some things that you dive deep into और आपको वहां dissonance दिखता है कि यार is this person is not has eliminated a certain point of view from their writing, then you start thinking acha actually I can't understand the world through the lens of this person. So I think it's to be a smart consumer of news, you also need to know who are the right people to follow, right? Who's, because हर चीज में तो हम एक्सपर्टीज नहीं ले सकते ना, so we it's always coming through someone. So it's both, you become a critical thinker, you have a better filter of identifying people whom you think you can trust. And third इसमें ये I think जो human biases वाली बात है, I think इस पे there's enough literature to understand how our own internal algorithms deceive us, right? So if you genuinely want to seek the truth, if you genuinely want to understand, right, and not just consume information to reinforce your identity or make a political point, then I think on a repeated basis you have to challenge your biases. And I would openly acknowledge that I also fall for confirmation bias, मतलब उसमें कोई point ही नहीं है, मतलब to deny, but I think the only thing is to acknowledge कि biases हैं, so to be conscious of it. So I think the more you learn about कैसे कैसे हम bias में फंस सकते हैं,
you can like kind of counter fight it कि अच्छा ये मैं क्यों सोच रहा हूँ. पॉइंट ये है ना इसमें कुशल की ट्रूथ सीकिंग, आई थिंक ये युवल हरारी की लाइन है कि ट्रूथ सीकिंग रिक्वायर्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, क्योंकि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको. ये सब मैंने जो बोला, इवन टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर, आप एक आर्टिकल को स्किम नहीं करोगे, आप 1 मिनट भी न्यूज नहीं पढ़ोगे, 5 मिनट लगाओगे, आप 5 मिनट वाले में 15 मिनट लगाओगे, आप लोग ढूंढोगे, आप अपने बायस से फाइट करोगे, टाइम ज्यादा चाहिए. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज टू से कि ठीक है मुझे सब कुछ नहीं जानना है, मुझे 2 चीजें जाननी है, लेकिन 2 चीजें मैं अच्छे से समझूंगा, बाकी चीजें अगर मुझे नहीं भी पता, लाइक it doesn't really matter. Like I have zero clue, like not zero, but let's say Russia-Ukraine war, right? At as we talk, I have very little understanding of कि अभी क्या हो रहा है. I have a friend in Ukraine. I talk to her sometimes just to understand what is she feeling, because I care about my friend as a human being. What is her life? So that is more important for me, right? And I know कि 2 साल बाद someone is going to write a terrific book about this war. And because I want to understand Putin, I can wait. Because immediately मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाए. So I have, but there are other things in my reporting that matter to me. So, that's how I will reallocate time. Because, I also have my non-journalistic life. तो इट्स नॉट कि पूरे टाइम बैठ के मैं सारे इश्यूज पढ़ता रहूं, बट जो मैं पढ़ रहा हूं एटलीस्ट you can put in more effort to understand those things. So that is my framework to become a smarter consumer of news or information. Read as less news as possible, more long form magazine articles, more books, more podcasts, right? Deeper stuff, and limit the kind of universe you cover if you don't have like infinite time. So I'll break this down so that I have understood you well. So Yeah. there is one way of consuming news if you're a creator or you intend to be a creator, and there Hmm. is one way of consuming news or information where you don't want to be a creator necessarily, but Hmm. you just want to consume. Now the problem is, like, how do we Hmm. solve this? Like, see, social media is basically designed very very smartly. I'm not saying it's the wrong thing or right thing, because इसके पहले television भी वही design पे था, television भी वही लड़ता है. Basically television wants you to watch it all the time, and social Yeah. media wants you to be on it all the time. So everybody is doing the same thing. The Yeah. same Yeah. idea is basically you are hijacking the human Attention. cognitive system, right? It's all about attention seeking. In Yeah. that scenario, it has basically and now social media has also added the element of massaging our ego, where because we have Yeah. millions of followers we feel good about ourselves. Just think about it, right? The beauty of Hmm. social media was there were elites, and then the elites were smashed. Literally they were Yeah. smashed. Like, now you have random people who have followers, and now they have become important. Now the problem is, and this applies to you and me as much, Yeah. it creates what we call the halo effect. Like, just because a person has high followers, or just Yeah. because a person is a celebrity in one thing, they tend Yeah. to, because you basically are peacocking all the time, right? And when I say Hmm. peacocking, it's virtue signaling, and everybody does it. Like in India, the so-called right wing has this thing, left virtue signals. I was like, I'm sorry, when everything, like standing up for the national anthem, taking a photo and showing how I'm feeding a cow, to Yeah. going and doing some work in the orphanage, whether left or right, Yes. everybody is peacocking. Everybody at a biological level peacocks. Now, the problem is social media incentivizes this. Now, if I Yes. am how do I get out of this trap? Like, if the essence of social media is you opine more, Yes. and मेरा केस है कि there are, I have this habit of doing monologues on my podcast. Like, I will speak non-stop for 30-35 minutes, right? And then there will be a case where somebody will come, and those poor people, yeah, I feel bad also at times. Like, they have paid me money to ask me a question, and then I say I don't have an opinion. Right. Right. now Yeah. now how would you handle a scenario like this, where you don't have an opinion, but then somebody says, yeah, I respect you so much, why do you not have an opinion? How would you answer that? No, I honestly, Kushal, I just answered it exactly the way you do it. That I like मेरे साथ तो अभी हुआ है. अभी I think 2 हफ्ते पहले मैं दूसरे पॉडकास्ट पे था, ठीक है, और उनने भी मुझे वायर मेटा डिस्कस करने के लिए बुलाया. न्यूज लॉन्ड्री का पॉडकास्ट था, और वहां पे 2 इश्यूज और डिस्कस हो रहे थे, ठीक है. एंड
अब पॉडकास्ट पे गेस्ट तो 3 गेस्ट और हैं, तो उन्होंने पूछा अच्छा आपको क्या लगता है, तो अब लाइक मेरा उसमें कोई ओपिनियन था ही नहीं, बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, और अगर मैंने पढ़ा ही नहीं तो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से कि अच्छा मैंने किसी का ट्वीट पढ़ लिया तो मुझे भी ये लगता है, देन आई हैड टू जस्ट से कि आई डोंट नो। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि मतलब आपका इस पे क्या व्यू है, एंड आई सेड लाइक मुझे कुछ नहीं कहना है बिकॉज मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। सो कुशल, मैं अब ये एटलीस्ट विद द काइंड ऑफ वर्क आई डू, आई थिंक this acknowledgement, humility to say that I don't know, I think in today's time, I'm hoping that more people start appreciating it. Because then उससे ये होता है ना कि मैं बोल रहा हूँ अच्छा इस चीज को मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, बट अगर एक दूसरी चीज है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है, तो वहां पे मैंने मेहनत की है। आई वेंट इन टू एक्सप्लोर अ टॉपिक विद इंटेंट, सो आई नो आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाट आई डोंट नो आई विल नॉट टेल यू। तो मैं तो इस assumption पे चल रहा हूँ कि इसके बिना तो मतलब dishonesty हो जाएगी फिर। एंड आई थिंक ऑनेस्टी रियली मैटर्स इन टूडेज एज। लाइक मार्टी बैरन जो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर थे, he stepped down I think 2 years ago. He said this very interesting line which stuck with me. He said, what is the biggest challenge of journalism today? It's not economics, he says it is trust. Okay, we are losing the battle of trust. People don't trust us. Okay, so how do you revive trust in the media is one of the central challenges facing journalism today. If we can fix it, a lot of things will fall in line. So, and that is one way I think that I personally believe in my work, and I say I optimize my work for building trust with my readers. I don't want 1 million people to read me, but whoever is reading, they should trust. और इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे वही मेरे न्यूज़लेटर में आई रोट अ स्टोरी फ्रॉम राजस्थान अबाउट दिस होल nonsense of uh, learning outcomes. There's a like very problematic data that which is a classic problem in Indian policy making about data fudging. मतलब हमेशा से रहा है, वो बहुत ही कोर प्रॉब्लम है ग्लोबली कि incentives create problematic numbers. तो मैं उस पर एक आर्टिकल लिखा था मैंने राजस्थान में जाके, और उसमें आई थिंक वन ऑफ द फीडबैक्स आई गॉट, मैंने उसमें स्टोरी रिपोर्ट करी और एंड में आई हैड अ पैराग्राफ वेयर आई सेड these are the things I know and these are the things I don't know and I'm thinking about it. And I got feedback from readers that they actually liked those lines because that told them that I'm not coming from a sense of authority कि मेरे को तो सब पता है, तू मेरी बात मान लो, right? But everything what I know has had a logic, had evidence, had documents, and that is how things were proceeding. So मुझे तो लगता है बोलो I don't know, and readers, listeners should appreciate that at least सच बोल रहा है बंदा कि मुझे नहीं पता। अगर वो if they're not able to appreciate this fact कि then I think वो गेम ही अलग हो गया। I think then like I don't know what to do about it rather than just saying कि आप there are other sources, there are 1,000 people who have opinions about everything, who can every day write an 800-word column on everything in the world. I don't know how they do it. मतलब होते हैं ना लोग जो हर चीज के बारे में, कैसे पता है आपको हर चीज के बारे में आपका व्यू कैसे है? तो अगर आपको चाहिए देन यू फॉलो देम। आई डोंट थिंक आई एम इन दैट गेम एंड आई डोंट थिंक कुशल यू आर आल्सो इन दैट गेम। तो आई थिंक दैट we should just take solace in that. And my hope is, like every time we think about our careers or work that we do, careers is not the right word, work that we do, is that we are making a bet on the future about what is going to be the trend. And I think in the current information economy, this thing will matter more and more, that you be honest with your readers about your limitations and they will trust you more, which is the problem with journalism right now. So that is how I think. Hmm. You know what? One more thing, like, what has been your view on Substack as a Yeah. platform? I Hmm. mean, full disclosure, I read a lot of Substack now. Yeah. I absolutely, Yeah. like, I'll go read John McWhorter. Like, I started Substack thanks to my friend Razib Khan, who is a geneticist, and Hmm. like I love reading science Substack. Right, you have scientists who are like these are Yeah. genuine scientists, and they're just now on Substack. That's it. They have a career Yeah. on Substack. They don't give a shit about the peer-reviewed world. They're just on Substack. They're reading paper. They Yeah. do some shit so do you think like this is the future then of smart reading and smart consuming, then something like Substack? Yeah. So two things. One, like I have been a fan of Substack when people didn't know about Substack. मतलब मैंने एक 2018 में
when Substack was just a new company, तब मैंने एक newsletter चालू किया था while I had my job at HT, just as an experiment. So I'm saying कि I have betted on the, and see, abhi most of my reporting, like these stories that you read, Tek Fog, it happened in my newsletter. I don't use Substack. I use another platform called Host. उसके अलग कारण है. But Substack represents the newsletter economy, so to say, right? Where individual writers say that we don't want to go to, we will build direct relationship with our readers. They are letting me in their inbox, okay, and I will deliver value. और अभी भी like मैं 2 newsletter अभी parallelly run कर रहा हूँ. So I believe कि Substack model has value. उसके बाद I think एक so I told you all of this to say that मतलब मेरा तो जर्नलिज्म ही न्यूज़लेटर्स में हो रहा है, राइट? तो आई एम अ बिग बिलीवर इन द पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ न्यूज़लेटर्स. द ओनली डाउनसाइड, व्हिच अगेन इज अ थिंग वी हैव टू मॉनिटर एज थिंग्स प्रोग्रेस, इज दैट Kushal, I still believe that there is some value in institutions rather than individuals. Okay, because again, as I said, right, कि even in journalism, अगर एक रिपोर्टर बस ये बोले कि मुझ गिव मी मनी, मैं हर जगह घूम के तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसमें वैल्यू है. बट आई थिंक लॉट ऑफ like truth seeking happens in teams when someone can come you and tell that तू ऐसे गलत सोच रहा है, आपने वो देखा क्या, right? So that discussion needs to happen, and for that we need diversity, है ना? तो अगर newsletter turns out to be like a individual is the only thing that matters और कुछ मैटर नहीं कर रहा है, I wonder if that will also become polluted. But I think if there is a way in which small group of people come together to create good journalism, so it's something in the middle. एक और मैं आपको एक recommendation बताता हूँ. एक बहुत ही अच्छी किताब है, रिवोल्ट ऑफ द पब्लिक. आपने सुना इसके बारे में? मार्टिन गुरी की किताब है, 2013 या 14 में आई थी. ब्रिलियंट बुक. ही वाज अ एनालिस्ट इन द CIA, एंड फॉर आई थिंक वो 10-20 साल से ही वाज मॉनिटरिंग द मीडिया इकोसिस्टम. सो बिकॉज ही वाज एट द CIA, एंड उन्होंने किताब लिखी विच काइंड ऑफ नाउ पीपल से प्रिडिक्टेड एवरीथिंग जो हम पिछले 5 साल में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है. एंड वन ऑफ द कोर आइडियाज विच ही टॉक्स अबाउट इज रिवोल्ट ऑफ द पब्लिक, राइट? उसका पॉइंट ये है कि इंटरनेट के जमाने में अथॉरिटी, राइट, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास थी, दैट हैज गॉन. सो आवर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, the power to control the narrative, that does not kind of exist. But the public has now revolted to take it back. However, the problem is that like this is such a messy relationship that it does not mean that just because the power has come to the public, that means all your problems have been solved, or whether the way someone wants to control the flow of information, right? Like 20 साल पहले आप बस एक टीवी चैनल बंद करा दो तो यू कैन लाइक कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. आज आप एक ब्लॉगर को जेल में डाल दो, राइट? एक ट्विटर पोस्ट पे किसी को अरेस्ट कर लो, आप ज्यादा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दबा सकते, इंफॉर्मेशन तो आएगी. सो अभी हम उस जोन में हैं वेयर काइंड ऑफ, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हो, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हो, सब जस्ट फिगर आउट कर रहे हैं कि जो नई सुनामी आ गई है, हाउ डू वी नेविगेट इट. सो उसमें सबस्टैक आई थिंक इज अ ग्रेट इंटरवेंशन. For someone like me, मेरे को नहीं लिखना 800 वर्ड का आर्टिकल, राइट? मैं आपको वायर वाला किस्सा, जो मेरा टेक फॉग वाला आर्टिकल था, वो 4000 वर्ड का था और वो बहुत लोगों ने पढ़ा, राइट? अब वो मेरे को कोई न्यूज़पेपर में बोले कि तुम ये 600 वर्ड में लिख दो, मैं कैसे लिख दूं? हाउ विल आई गेट यू द नुआंस? दैट इज द पावर ऑफ आई थिंक सबस्टैक, वेयर आई डोंट नीड समवन्स परमिशन कि ये स्टोरी है कि नहीं, ये स्टोरी कैसे बतानी है. So that experimentation, which is definitely needed in this time, Substack offers that opportunity, which is why I believe in its promise. Right. So abhi last topic hai, and good that few of the live viewers have asked this question. I'm reading it क्योंकि 2-3 तो हमने cover कर लिए. Like somebody Sure. said, what is needed to make journalism better in India? Most is just biased reporting without much of analysis. Our own bias is creeping in. Like, Yeah. see, and you will see a sampling size, because मैं fully बोल दूं क्योंकि मेरी nature ऐसी है, तो मुझे सुनने वाले भी है ना वो मेरे जैसे ही हैं. To be very honest, मेरा Right. audience भी वैसा है.
So Yes. वो फिल्टरेशन अपने आप होती है. It's a Yeah, natural yeah. process of filtration. Right. क्योंकि वो Right. अगर जो अपने echo chambers वाले लोग होते हैं वो यहाँ आते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार ये तो साला हमेशा भाड़ के जैसे मेरा पोपटी कर देता है, मेरे दिमाग में इरिटेशन क्रिएट करता है, इसके पास नहीं जाना. Yeah. So वो Confuse कर रहा है. मगर Yeah. yeah, Yeah. somebody has said like many right-wing, left-wing media outlets have successfully convinced people that lynchings or other crimes, etc., are perpetrated by a particular religion against the other at a large scale. How can this propaganda be fought? I was like, believe me, see, I mean, that's what him and I are discussing. साला हम खुद थक गए इसके बारे में सोच के Yeah. कि समझ में नहीं Yeah. आता क्या कर रहे हैं. But this is a core question, and you spoke about the economics, but this is an observation and a question, and I'll club two. So somebody has said, is India's news industry viable considering it prints 1 lakh newspapers, 18,000 weeklies, and Yeah. 380 live TV channels, as opposed to, say, America, which has 1,200 newspapers, 50 live TVs, of which 90% are owned by 6 oligarchs? Interesting. I didn't know that. That's an interesting observation. So, सवाल क्या है कुशल कि मतलब क्या करें? Is that the question? क्या करें? See, basically, let me tell you, the average IQ of my listener base is very high. Yeah. So sometimes even I learn from my listeners. They ask such questions. I'm like, साला क्या question पूछा? सोचना पड़ता है. Yeah. नहीं, अब ये सवाल है, ये सोचने वाली बात है. मेरे को मतलब it's I'll give it a thought कि is the size too, I think that's the question, right? It's too diverse, is it too big कि individually कुछ sustain हो पाएगा कि नहीं? Also like giving the economic like the structure in which we reality exist. मतलब हमारा average income Paying $2,500 capacity किसके है. पास है? हाँ, right? और news operation sustain करने के लिए क्या चाहिए, right? So एक चीज I'll tell you, I think अगर मुझे आंसर पता होता तो शायद आज मैं उस पे कर रहा होता, right? But I'll tell you, मैं लोगों को बता रहा हूँ. But I think let's I think as I discussed with other friends also, sometimes you don't necessarily need the answer, but you're getting towards the answer, right? तो अभी एक चीज जो recently I think one of the things I've started believing more of is that आपने कुशल एक चीज नोटिस कर, एंड ऐसी मैं एज अ जर्नलिस्ट हूँ और मैं लिखता हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव वहां से आ रहा है. आपने देखा इंडिया में मैगजीन्स नहीं है. मैगजीन जर्नलिज्म इन इंडिया इज डेड. मतलब देयर इज नो अदर वे टू पुट इट. एंड व्हेन आई से मैगजीन जर्नलिज्म, राइट, व्हेन दैट व्हाट इट मींस, राइट, यू आर नॉट कवरिंग द न्यूज टुडे. आपके पास एक हफ्ता है, आपके पास 2 हफ्ता है. जैसे आपने हमारा पॉडकास्ट कहां से स्टार्ट हुआ, आपने बोला कि अच्छा वो the hot moment has gone. Now we have the time to understand what happened, right? That is the job of a magazine, that you're not tuned into the news cycle, but still it's a timely topic on which you do deep dives. That space in India institutionally does not exist. वो पहले था, एक टाइम पे लोग इंडिया टुडे पढ़ते थे, पता नहीं 20 साल 30 साल पहले. अब कौन पढ़ता है आउटलुक मैगजीन या जो भी आपको नाम लेना है? So that I think, Kushal, what is happening a lot now is that lot of that space doesn't exist. A lot of young journalists, senior journalists, they want to do that work. चाहे आप उसको किसी भी कैंप में डाल लो, but वो desire है that we want to do quality work, उनको platforms नहीं मिल रहे हैं. So a lot of these people are exiting. They leave our industry, and that's one of the things I feel more sad about. Indian journalism is losing a lot of talent. Okay, some of them go abroad, some of them just exit the industry. They work at startups, they work at PR firms, marketing firms. Because अगर एक industry talent की कदर नहीं करेगी, right? If you don't, for example, pay people well, आपको जो अगर पता चलेगा कि journalism organizations में like how poorly people are paid, उसके बाद अगर वो news organization labor exploitation में लिखेगी, तो आप बोलोगे कि पहले अपना घर देख लो. That is the kind of situation, right? So that's what I want to say, that we don't respect the work that journalists do. We don't pay them well because somehow we start thinking कि इसकी कोई value नहीं है. So I think start वहां से होना चाहिए कि it should be appreciation कि this work matters, okay? And good people who are willing to put the time and effort are compensated for that work so that they stay and stick around. That, I mean, and if these people stick around and are not asked to produce news daily, to feed social media metrics, and are given the space to take a week to write a story, I think वहां से solution निकलना चालू होगा. You see what I'm saying? अब
वो स्पेस कैसे क्रिएट हो, उसके लिए क्या हमें नॉन प्रॉफिट मतलब सम बिलियनियर शुड कम एंड इन्वेस्ट मनी, ये लो यू नो तुम ये लो पैसा, डू गुड जर्नलिज्म, डोंट थिंक अबाउट रिटर्न्स इमीडिएटली, हम आएंगे उस पे, बट इमीडिएटली पहले अच्छा जर्नलिज्म प्रोड्यूस करो, मे बी दैट इज वन वे, यू नो मे बी सब्सक्रिप्शन वाला जो है उसमें कुछ चेंज हो जाए, आई डोंट नो, मे बी सम पीपल इंस्टेड ऑफ पेइंग $100, some people who are otherwise wealthy start paying a larger ticket size to promote individual journalists. So I think that is the, again, I don't have an answer, but I'm saying these are the directions in which I have started thinking. That instead of thinking the Indian media as like one big entity, जैसे आपके व्यूअर ने सवाल पूछा, आप उसको माइक्रो प्रॉब्लम में तोड़ दो कि अच्छा मेरे को अगर ये सेक्टर कवर करना है और इसके लिए मुझे 5 अच्छे जर्नलिस्ट चाहिए, मुझे 50 नहीं चाहिए, 5, तो how can we support them, what is the model that can come, how can we create that space which is de-linked from problematic incentives of the internet and social media. So again, this is a long rambling answer to say I don't really know, but I think these are the ways in which I'm thinking about getting to a I potential understand. solution. It's called thinking out loud. I think बालाजी श्रीनिवासन के साथ मेरी बहुत बहुत इस विषय पर ऑफलाइन बात हुई है. बालाजी श्रीनिवासन इज अ ग्रेट टेक Yes. इनोवेटर थिंकर, एंड Yeah. मैं बालाजी को हमेशा पूछता था. बालाजी हमेशा बोलता है द ओनली वे आउट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज सीकिंग सिस्टम. बट लाइक वन डे मैं बालाजी के साथ बैठ के आई एम गोना tell him, okay, explain this. But just to back your point about Yeah. journalists leaving the profession, it is purely a coincidence कि आज मैंने ये चीज बुकमार्क की थी. दिस इज पॉल ग्राम, and Huh. this is the most regretted college majors Yeah, I saw percentage of that. graduates who would pick a different major if they could. And Yeah. the source is ZipRecruiter's monthly survey of 1,500 job seekers published. Highest is journalism. I know. Yeah, I saw Highest. this. Yeah. Yeah. So I it's saw. purely coincidental that you mentioned this, and you know has like मैं so one आपसे more. सवाल पूछूं बिकॉज आई मीन मेरे को भी आपसे एक सवाल No, no, पूछना है please, please, बिकॉज please, क्या please. आपको क्या लगता है, आई थिंक एक मैं मानता हूँ इस बात को एंड आई वुड कि एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम माय, मैंने बताया ना आई नेवर एस्पायर टू बी जर्नलिस्ट बट नाउ आई एम, तो मैं 7 साल के एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा कि जर्नलिज्म रिक्वायर्स अ सर्टेन स्किल. ओके, इट्स नॉट समथिंग कि आज मैंने सोचा कि मैं पत्रकार बनूंगा तो आज से मतलब और लाइक आई विल नो हाउ टू डू दिस. इट टेक्स वो जो सारी जो चीजें हैं राइट ऑन what makes for what qualifies as journalistic standard of evidence, how do you follow that process, how do you beat your biases, all of those things that I believe make for a good reporter, वो years of experience से मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां तक पहुंचने की. बट आई ऑल्सो सी दिस एटलीस्ट सोशल मीडिया पे कि जर्नलिस्ट की तो आजकल कोई नीड ही नहीं है, यू नो सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया से मिल जाता है. तो आई जस्ट वांट टू गेट योर व्यूज ऑन व्हाट डू यू थिंक इज द contribution of a journalist to the public sphere, or rather than journalist I would say reporter, because there's so many things a journalist could be. So आपका उस पे क्या view? Do you believe that it's a skilled job or no? I genuinely believe it's a skilled job, and I believe the business model has changed. First of all, I think mainstream media has to survive because, and I agree because you mentioned this point in your article too, in your essay too, Hmm. because the cost of running a news. देखो यार, हर आदमी ओबी वैन नहीं अफोर्ड कर सकता. So Yeah. ये बोलने की बात है. अभी बालाजी will come back to me, and I use Balaji because he will come back to me and be like, look, bro, make it Uber like. Everybody has a camera. Everybody has an iPhone like or an Android phone. They can go Yeah. and create decentralized reportage. But the point is, how do you train them? Like there is a Yeah. training involved in Yes. reporting everything also. A journalist is supposed to know a basic level of legality. कि is this Yes. legal, is this not. Like I'll give you an example. In America, वो जो यूजर कंसेंट होता है ना टू पुट देम, हर स्टेट का कंसेंट लॉ अलग होता है. इन टेक्सास यू डोंट नीड समबडी एल्सेस कंसेंट टू शो देयर फेस ऑनलाइन. टेक्सास I में जरूरत see. नहीं होती है. हाँ, मगर Okay. कुछ स्टेट्स में Okay. होती है. सो इमेजिन करो आप अगर यूट्यूब कंटेंट जनरेटर हो. देखो इंडिया में पीपल फॉरगेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट Hmm. ना. इमेजिन करो अगर इंडिया के हर लॉ अप्लाई होने शुरू हो गए, हमारे पास जेल नहीं होंगी. इंडिया के लॉ इतने घटिया हैं. टेक्निकली मुझे तुम्हें दोनों को इस समय कोई ना कोई इंडियन लॉ के हिसाब से तो जेल में, और मेरे सारे व्यूअर्स को जेल में होना चाहिए टेक्निकली. ये हाल है Hmm. इंडिया का. वी आर अ वीक इंप्लीमेंटिंग स्टेट,
and a Yeah. state with dreadful laws. Like, this is our Hmm. reality, boss. और ऐसे केस में we need, see, there are two roles. I think we need reporters backed by large media outlets, and then we Yes. need, I think we need to differentiate between reporters and journalists. A journalist is a truth seeker. A reporter is एजेंडा पेल रहा है, क्या पेल रहा है मुझे कुछ मतलब नहीं है. जर्नलिस्ट का काम है उसको देखना, और वो हर चीज में नहीं कर पाएगा. एंड वी नीड टू क्रिएट, एंड यू नो टॉम निकल्स था शायद, उसकी जो बुक थी, जिसने वो बुक लिखी थी द केस फॉर एक्सपर्टीज, और वो रो रहा था कि एक्सपर्टीज मर रही है. और उसका रीजन ये है Yes. कि, लेट मी टेल यू, जो घटिया लेवल की रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट का रोल और साइंटिस्ट का रोल कोविड में हुआ है, Hmm. they have Yeah. basically removed the trust of an Yeah. average person from the elite class. Yes. Or let me Yeah. tell you why I chose The Wire and Meta as a saga. Do people Hmm. realize how much people hate media now? Yeah. And I know. you Hmm. know, the reason, you know, I have a good friend of mine. He's come on the podcast. Shout out to Ram Prasad. You know, you like him. He's a great thinker. Great thinker. I love Ram because he's like me and you. Like, he's always thinking out loud. And I hope Ram watches this. Right? And you know, he always tells me, यार इतना bias है दुनिया में कि हमको समझ में नहीं आता है करे क्या. And the reason I say this is that we have to have two separate fields. In my view, there has to be mainstream media that reports. Now, sometimes they may not report things, and this is where social media outrage comes. Hmm. कि समझ लो कुछ नॉर्थ ईस्ट में हुआ, the famous line by राजदीप, tyranny of distance. मगर अगर किसी ने पकड़ लिया उसको और सोशल मीडिया में आउटरोच हुई, तो ये जो क्लिक बेट ड्रिवन मेन स्ट्रीम मीडिया मॉडल है ना, वो भूखा है क्लिक बेट का, वो उसको पिकअप Hmm. करेगा. Magar Yes. Yes. eventually, you know what, the role of what I call a journalist, and today it's funny because even a podcaster like me is now, whether we like it or not, doing that role. When I will look at everything and then I will be like, okay, this is the evidence. Like, I recently did a monologue on Make will sense of it. wokeism, yeah, so will wokeism destroy India. मैंने लिखा नहीं, मैंने बोला उसके Hmm. ऊपर, ठीक है. Okay. So Okay. मैंने क्या Yeah. किया, मैंने बोला ये वोक कल्चर है अमेरिका का, वो ये चीजें डिमांड करता है, ये इंडिया की पॉलिसी रियलिटी है. ऑलरेडी तो सब कुछ है इंडिया में, तो क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो? सो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो. इट डजंट मीन आई एम अप्रूविंग इट और डिसअप्रूविंग इट. आई एम अपोज टू इट एट अ फंडामेंटल लेवल. वो मेरी थिंकिंग है. Hmm. बट Hmm. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई थिंक दिस इज द फ्यूचर. पहले क्या होता था में, मेन स्ट्रीम वाज द ट्रूथ सीकर and the reporter both. They have lost the mantle of truth seeking. The truth seeking is now decentralized, and I believe a decentralized truth seeking method is very superior. And I say this with full responsibility, whether it's owned by a Washington Post, जो Bezos owned है, या अंबानी owned media है, या अडानी owned media है, या सल्सबर्गर owned न्यू यॉर्क टाइम्स है, वो भी उतना ही डेंजरस है. और बड़ा शाणे हैं लोग, वो जकरबर्ग करते रहते हैं. सल्सबर्गर कोई नहीं मेंशन करता. इट्स अ फोर्थ जनरेशन डायनेस्टी ओनिंग दैट डैम पेपर. मैं बोल रहा हूं ये ओपनली कि वो भी डायनेस्टी है, वो भी डायनेस्टी. अगर तुमको जक से प्रॉब्लम है तो सल्सबर्गर से भी रखो प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी एक डायनेस्टी है. आई थिंक इट्स अ जॉब ऑफ पीपल लाइक यू एंड आई, और मैं कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मिलियंस ऑफ सबस्टैकर्स, मिलियंस ऑफ न्यूज़लेटर जनरेटर्स, people who are genuine truth seekers. It is the, और हर फील्ड में नहीं हम कर सकते. You did it in Meta Wire, you did it in Tek Fog. आपने फूड के ऊपर लिखा हुआ है. Yeah. I'll give you an example. अभी गैरी टॉब्स से कुछ मिस्टेक्स हो गई है, मैं मानता हूं, मगर गैरी टॉब्स ने जो शुगर के ऊपर काम किया है, वो, या फॉर Yeah. एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी बुक थी, स्टुअर्ट रिची ने एक बुक लिखी थी. इट वाज टाइटल्ड Yes. साइंस Science फिक्शन. fiction. Love that book. I love that book. लव Yeah. दैट बुक. कि मतलब Yeah. Yeah. साइकोलॉजी के नाम पे ये जो पेलते हैं और 65% रेप्लिकेशन में फेल होती हैं ये चीजें. सो Yeah. ये हमारे द ट्रूथ सीकिंग हैज टू बी नाउ डिसेंट्रलाइज्ड. यू कैनॉट Hmm. कीप ट्रूथ सीकिंग इन द हैंड्स ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया. ये लोग बर्बाद कर देंगे दुनिया को. एंड आई से दिस विद फुल रिस्पॉन्स. आई हैव फ्रेंड्स हु आर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट. Believe me, Yeah. I have friends there. They have come on this podcast. They have come. Shekhar has come. Smita Prakash has come, and many people will come in the future. But I cannot, and I say this with respect to them, but I don't trust the system enough
to leave Hmm. truth seeking to them. And I hope Hmm. you understand where I'm coming from. Like, I I know, am I know. very cynical. I'm very Yeah. cynical in their capability to do that. But one last question before I wrap up. Like, Yes. how, Yeah. so somebody has asked, how does Samarth view the quality of collection and curating of government data and statistics of government of Hmm. India as a journalist, and how Hmm. has it evolved over the years? And मैं बोलूं, ये एक चीज मेरे को अगेन मेरे दोस्त राम प्रसाद की बात याद आ गई कि यार, जर्नलिस्ट को डेटा नहीं पढ़ना आता आज की डेट Yeah. में. Hmm. सो हाउ डू यू Yeah. थिंक वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? उनको डेटा एजुकेशन कैसे दें? तो इसमें दो आई थिंक दो इश्यूज आए हैं. पहला कि आई थिंक वाज मोर अबाउट द सिस्टमैटिक लेवल, राइट, अबाउट डेटा डिसेमिनेशन एंड कलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. और सेकंड जो आपने पूछा अबाउट डेटा लिटरेसी अमंग जर्नलिस्ट, तो मैं दोनों का आंसर देता हूँ बिकॉज दैट्स लाइक. और इस पे आई डोंट नो, आपको शायद मैंने नहीं भेजा, बट आई रिटन अबाउट डेटा जर्नलिज्म इन इंडिया. तो आई विल सेंड यू द एसे आफ्टर आफ्टर दिस पॉडकास्ट. तो पहले का मैं चलिए पहले मैं दूसरा वाला बताता हूँ बिकॉज इट्स मोर पर्सनल. कि देखिए, जो डेटा लिटरेसी वाली बात है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अमंग जर्नलिस्ट. मतलब जो राम ने बात बोली वो 100% सही है. और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एक्नॉलेज प्रॉब्लम है. मतलब द जर्नलिस्ट नोज कि मेरे को नहीं पता. आपने देखा होगा वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक पर्सनली, इससे लोग बोलते हैं ना मेरी मैथ अच्छी नहीं थी इसलिए मैं जर्नलिस्ट बन गया. इन द सेंस कि इसलिए हमने इंग्लिश पढ़. एंड आई एम लाइक, ठीक है, बट दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. मतलब यू एक्सेप्ट इट एज अ लिमिटेशन एंड से कि, बट इट्स नॉट समथिंग टू प्राउडली से. तो वो, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं जर्नलिज्म में आया था मेरा डेजिग्नेशन था डेटा जर्नलिस्ट. मैंने 2 साल बाद कुशल वो अपने नाम से टैग ही हटा दी. लाइक आप मेरे कोई भी प्रोफाइल में देखोगे आई जस्ट से आई एम अ रिपोर्टर. मैं ये नहीं बोलता मैं डेटा रिपोर्टर हूँ. बिकॉज मतलब वाई आर वी मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन दैट वन पर्सन जिसको डेटा आता है वो डेटा रिपोर्टर है बाकी रिपोर्टर है. यू सी व्हाट आई एम सेइंग. सो उसका सोल्यूशन, अब सोल्यूशन देखिए, एक पॉइंट पे तो मैं ये बोलूंगा थोड़ा मेरा गिव अप भी हुआ है बिकॉज आई थिंक हमने बहुत मतलब सिखाने की कोशिश करी है. बट उसके लिए जर्नलिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड सम डू कि देखो ये हमें नहीं आता. सो कैन वी कोलैबोरेट विद दोज हु नो दिस. सो विच इज व्हाई आई हैव फ्रेंड्स हु वुड व्हेन दे आर वर्किंग विद, उनके पास कोई नंबर्स की एक्सेल शीट आई तो वो मेरे को फोन कर लेते हैं कि देख ये हमारे बियॉन्ड है, यू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस. तो रिपोर्टर लेवल पे तो फिर भी ठीक है. प्रॉब्लम इज जो एडिटर्स हैं, राइट, एडिटर्स हु आर लाइक सीनियर पीपल, उनको कुछ नहीं चमकता है अबाउट नंबर्स. और वहां से प्रॉब्लम होनी चालू होती है बिकॉज अब कुछ भी आएगा ना दे गेट एक्साइटेड कि अच्छा ये तो डेटा है, डेटा, दैट काइंड ऑफ की हर चीज में इंफोग्राफिक लगा दो, हर चीज में एक चार्ट बना दो. आई मीन मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट प्लेन बुलशिट. मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं होता है. तो अगर एडिटर अपने, मैं तो हमेशा स्टार्टिंग में भी बोला, एडिटर का काम है अपने रिपोर्टर से सवाल करना. ओके, दैट you have brought me this information and the editor has to challenge. But if if they don't have the capacity to challenge, then garbage will be printed in newspapers. And unfortunately that happens. If I make my job to criticize data reporting in Indian media, तो मतलब मैं रोज सिर्फ 24 घंटे यही काम करूंगा. इट्स सो मतलब इट्स सो प्रेवलेंट बिकॉज वी डोंट हैव स्टेटिस्टिकल थिंकिंग. फॉरगेट एक्सेल चलाना, एक होता है ना थिंकिंग स्टेटिस्टिकली, दैट इज मिसिंग. तो अपने एंड पे मैं यही करता हूँ कि जो रिपोर्टर इंटरेस्टेड है आई ट्राई टू हेल्प देम. बट इसका सोल्यूशन आए, और ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है कुछ, दिस इज लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम. जो लैक ऑफ डेटा लिटरेसी है वो ग्लोबली इश्यूज है. आपने देखा होगा वो कोविड के दौरान ही, मतलब कितने सारे स्टेटिस्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं रिपोर्टिंग में. आप एक एक्सेप्शन केस को अगर नॉर्म दिखा दोगे, कि वैक्सीन डोंट वर्क बिकॉज वन पर्सन हैड साइड इफेक्ट. आई मीन you see what I'm saying. मतलब statistically that has to happen. So that does not mean that you represent an isolated case as the standard case. और उसमें बोलोगे हम तो फैक्ट बता रहे हैं, but no, if you don't give me the statistical context, you are misleading me. तो आई थिंक अब मैं प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दी, एक मैं सोल्यूशन ये बताना चाहूंगा इवन फॉर योर लिसनर्स हु माइट बी इंटरेस्टेड. एक किताब है बहुत ही अच्छी, कॉलिंग बुलशिट. आपने सुना है इसके बारे में? बहुत ही बढ़िया किताब है कॉलिंग बुलशिट. एंड उसका फंडामेंटल गोल ये है डेटा लिटरेसी. सो आई हैव आस्क्ड माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स कि तुम अगर वो किताब ही पढ़ लो, राइट, मतलब दैट इन इटसेल्फ विल गिव यू द राइट क्वेश्चंस टू आस्क व्हेन यू आर डीलिंग विद नंबर्स. बिकॉज आज के टाइम पे द नेचर ऑफ बुलशिट हैज चेंज्ड. मैं आपको 10 नंबर बताऊंगा और आप एक्साइटेड हो जाओगे कि
मैं तो डेटा बैक आर्गुमेंट दे रहा हूँ. जब आपको यू नो ऑन द अदर साइड यू विल सी कि यू नो यू फील पिटी कि यार मतलब आप नंबर तो दे रहे हो बट लाइक डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग. सो वो कॉलिंग बुलशिट एक किताब है. आई थिंक इफ मोर जर्नलिस्ट रीड इट मे बी इट हेल्प्स देम, बट या दैट्स अ प्रॉब्लम. और जो दूसरा आपने सवाल पूछा था, जो आपके आई थिंक लिसनर ने सवाल पूछा था राइट अबाउट द डिसेमिनेशन ऑफ डेटा एंड, तो Yeah. उसमें दो आई थिंक दो व्यू पॉइंट्स हैं. एक आई थिंक वन इज अ जनरल प्रॉब्लम विच इज दैट getting access to government data in India has been hard for a long period of time. Formats, मतलब आप पीडीएफ में डेटा दे देते हो, मतलब अब मैं उसको बैठ के क्लीन करूं या किसी गवर्नमेंट साइट में कहीं डेटा पड़ा होगा, राइट? सो दीज आर वेरी क्लासिक इश्यूज दैट लॉट ऑफ अस हु वर्क विद इंडियन डेटा have been facing forever. Some things have improved on that front because some open source people have come together, cleaned it, they put it out on portals, some collective effort from the community. Some things have improved from the government side on disseminating data. But I think the other thing that has started happening, and on this, one of my journalist friends, Pramit Bhattacharya, he has written very good essays on this topic, which is something we, उसको ना ऐसे, I don't think वो बीजेपी का इशू नहीं बनाना चाहिए. We as citizens we should think about it कि 1950s में इंडिया का जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम था वो ग्लोबली एक माना जाता था कि इंडिया ने ऐसे सर्वे कराए हैं एंड अदर कंट्रीज यूज्ड टू कम एंड लर्न फ्रॉम अस कि इंडिया वाले लोग क्या कर रहे हैं. बिकॉज महालनोबिस उन पे भी बहुत डिबेट है, बट आई एम सेइंग एक नैरेटिव बता रहा हूँ कि उन्होंने जो सिस्टम्स सेट किए थे दे वर एन इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड. But over time, including some of the things that Mahalanobis himself had set up over the period of years, our statistical system had degraded. And what is increasingly happening, and I've seen, I can establish it for my work, data is increasingly getting politicized today. Okay? तो जो डेटा नैरेटिव सूट करता है आप वो रिलीज करोगे, जो नहीं सूट कर रहा है आप उसको छुपा दोगे, जो कंज्यूम भी कर रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो आपकी स्टोरी में डेटा सूट करता है आप उसको दिखाओगे, जो नहीं सूट कर रहा है नहीं दिखाओगे. So this intermingling of data and politics, both especially like from the side of government, that is worrying. I think the more we depoliticize data, the better our understanding could be. But of course, the more data you have, the more like you'll be more accountable if more data starts coming out of the government. So I think wahan pe it is becoming a bit challenging that as citizens we should demand, like as a right ki you Yes. give us data. It's not about each side. तुम डेटा दो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन पे हम फाइट करेंगे. इट्स नॉट, डेटा इज नॉट ऑब्जेक्टिव. वो एक मिथ है कि डेटा ऑब्जेक्टिव होता है, तरीका होता है इंटरप्रिटेशन का, राइट? और वहां पे रीजनेबल पीपल कैन आर्ग्यू एंड डिसएग्री कि व्हाट इट मींस. बट ये तो मत करो ना कि तुम डेटा ही नहीं दे रहे हमें. सो आई थिंक दैट is one of the worrying trends that is happening right now. So I'll stop there. No, I agree with you. Like, I was talking to a friend of mine offline, and she was telling me कि कुशल भाई ये क्या करें, ये एनालिसिस करना चाहिए ट्रेंड लाइंस का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आई विल बी वेरी क्लियर, लाइक आई एम ट्राइंग टू स्टडी दिस फॉर अ while independently, and I have clearly established that, and I say this with full responsibility, that there is a clearly anti-Hindu bias in reporting of media outlets outside India. Okay. There is a clear, I Outside have India. Okay. Okay. आउटसाइड इंडिया. इंडिया को छोड़ दो, इंडिया में जो है वो है. मैं आउटसाइड इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में सब Okay. पढ़ रहा हूँ, और मैं इंडिपेंडेंटली आर्काइव्स डाउनलोड कर, मगर मेरी कैपेसिटी के बाहर हो गया ये अभी. सो मगर एक तो डेटा नहीं मिलता है, मगर मेरे को वेस्ट में सर्च करने को बहुत आसान पड़ रहा था. मैं बोला Yeah. स्टैट्स कनाडा चले जाओ, यू मिल जाता है डेटा, बिल्कुल यू मिल बिल्कुल. जाता है Yeah. डेटा. यूके गवर्नमेंट के डेटा में चल जाओ, यू मिल जाएगा डेटा. और मैं खुला बोल रहा हूँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो रिलीजन के बेस पे आपको बेयर बोन्स डिटेल दे देंगे. हाँ, अगर उसमें आया कि समझ लो इस रिलीजन के लोग ज्यादा क्राइम कमिट कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है. उनके सिस्टम्स इतने इंस्टीट्यूशनल है. रोबस्ट हैं. या इट्स अनबिलीवेबल. मगर बिफोर आई गो, मैंने एक ये इमेज रखी थी, मेरे एडिटर ने मेरे को ये भेजी थी कि this is a struggle that I talk to my editor daily, and so I'll have people consulting me and telling me that भैया आप ये कर दो तो ऐसे व्यूज बढ़ जाएंगे, भैया आप वो कर दो तो ऐसे व्यूज बढ़ जाएंगे. and sometimes I wonder, यार तुम मेरे को कितना बेवकूफ समझते हो. तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि ये करने से होता है? मगर सुनो, माय एडिटर सेंट मी दिस फोटो, ही इज लाइक ये 4 फोटो देख. यार ये हमारा मीडिया है. ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे.
क्या पीएम मोदी लाएंगे वर्ल्ड कप? तेरा क्या होगा पाकिस्तान? आ रहा है हिंदुस्तान। हम्म, भारत से हारने के लिए जीती बाबर सेना। हम्म, ये जर्नलिज्म है? हम्म, ये जर्नलिज्म yeah, नहीं है। ये दिस इज एंड बेसिकली व्हाई डिड माय एडिटर एंड हु इज अ फ्रेंड सेंड मी दिस, लाइक ही सेड, देख ये स्टैंडर्ड है, या अपन ये करें या अपन दूसरी चीज करें, डिसाइड कर लो। और मैं yeah. यार आई कांट डू दिस यार। आई मीन अगर ऐसा है एंड दिस इज द ओनली वे, देन इट्स ओके, आई विल फाइंड अ न्यू करियर। I know, I know. Yeah, yeah. I think, I yeah, can't yeah. do this. I can't sell my soul, man. It is frustrating. Like, every time a person tells me, आप negative titles डालो अपने podcast की Yeah, heading में, virality के लिए, yeah, नहीं डालूंगा मैं। yeah, नहीं, yeah, yeah. मेरे को नहीं, नहीं कर। बिल्कुल, yeah, अगर कोई genuinely नेगेटिव चीज होगी तो मैं डालूंगा, मगर नहीं डालूंगा, नहीं तो मैं yeah, yeah, नहीं yeah. डालने वाला। आई एंड इफ दैट मीन्स आई कैनॉट ग्रो, then so It's be fine. it. I will live Yeah, with yeah. that reality. It's Hmm. my call as an individual, and as I have to freaking look at myself in the mirror. Like, what? I don't want to be a moron, and this is moronic. What is Yeah. this, yeah? कुशल, आप अभी कल की बात करते हैं। एक आज तक एक सेगमेंट था, आई मीन अगेन दिस लाइक दिस मर्डर, आई मीन लाइक सच अ हॉरिफाइंग केस, एंड प्राइम टाइम पे आज तक पे क्या न्यूज चल रही थी, मेरे को किसी ने क्लिप भेजा, दे वर मोरलाइजिंग डेटिंग एप्स। मतलब पूरा एक सेगमेंट था अबाउट कि इंडिया के यूथ कितना टाइम डेटिंग ऐप पे स्पेंड करते हैं उससे, और अनएम्प्लॉयड हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। इट वाज अ मोरल लेक्चर ऑन कि लोग डेटिंग ऐप यूज करते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि लाइक प्राइम टाइम पे आप ये चला रहे हो अबाउट समथिंग ट्रेजिक हैज हैपेंड, एंड दिस इज व्हाट मोरल प्रीचिंग यू आर डूइंग। तो मैं एक सो आई एम सेइंग, जो आपने 4 एग्जांपल दिया, आई थिंक इसके 400 एग्जांपल मिल जाएंगे हमें रेगुलर बेसिस पे। बट एक चीज कुशल मैं बस पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अब हमने इतना डिस्कशन कर लिया, कि आई डोंट थिंक देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड द मीडिया। ये जो हम बोलते हैं ना मीडिया ने ये किया, ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज कुशल, मैं भी मीडिया हूं और आप भी मीडिया हो। आपका ऐसे, मैं आई पुट द टैग ऑफ जर्नलिस्ट with on my website, on my like I represent myself as a journalist. आप पॉडकास्टर बोल रहे हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं बोलेंगे। बट एंड ऑफ द डे both of us are part of the media, because there is no such thing as the media. And I think for people who want to think more clearly about the media ecosystem and the environment and what it means for society, the more we start not using the term the media, I think it's better. So that, आप समझ रहे हैं क्यों? Because then we start bucketing everyone together, कि मीडिया खराब है या मीडिया, क्योंकि फिर तो मीडिया खराब ही रहेगा। Because Fair enough. in the bigger circle, there's a very small circle. Like राजकुमार झा, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। He said that good journalism is not dying, it's becoming better and better. It's just that bad journalism is making lot more noise. ओके, तो जो अच्छा काम हो रहा है वो छुप जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक दिस माइट बी अ नोट टू एंड, एज जर्नलिस्ट, टू फाइंड आउट वेज टू डू मोर गुड वर्क दैट पीपल कैन ट्रस्ट, and for readers to also, like, and listeners and viewers to identify and appreciate and follow good work. And there will be journalists who will do the stuff that you just showed, and there will be people who will only want to watch that. So that is fine. I think sub apne equilibrium mein, I think can make peace with it. But at least you and I and people who are really interested in seeking the truth, uh, we are fine. I think we'll do fine by our own small communities. And that's why I'm like also hopeful about the future of the information environment, despite like all the problems that I see on a day-to-day basis. Okay, before we wrap it up, how can people support Yes. you? Support me. I think Yeah. it's primarily, I think, to subscribe to my newsletter. Right now, I'm not monetizing it, but I think the best support comes from like signing up, giving me feedback, sharing my work. I think it's all support in kind rather than monetary at this point. So yeah, if my link to my newsletter is on my Twitter bio,
and on my website. So yeah, I would really appreciate if more people sign up for my newsletter. All right. First of all, before we wrap it up, Samar, this has been an absolutely wonderful conversation. I'm so glad. I wish there were more people who are like this, and I mean this. Uh, when I read your work, I was like, here's a guy who just cares about the truth, and I was like, um, you know, I can work with someone like this. I don't care which side of the political aisle they are because I know they care about the truth. And to me, the truth matters more than Congress, BJP, AAP, and everything cumulatively, because political tribalism has consumed people. I have Yeah. never hidden I'm a BJP voter. I don't hide it. I tell people in advance कि भैया मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, आने के Yeah, पहले you बता told रहा me हूँ. also. Yeah, Yeah. yeah, And yeah. some people find it funny. You must have been like, ये क्यों बोल रहा है? मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतने लोग ना बोलते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. So Hmm. I'm glad that you are the way you are. I wish you nothing but success, Thank you so and I much. sincerely mean this. I sincerely mean this. You are wonderful, and I hope there are more like you. And if you're a young kid, यार इसको कॉपी कर लो अगर कॉपी ही करना है तो. No, thank you so much. It means a lot. And I think the more I think we have these discussions, I think that's the only way to raise the quality of debate and understanding. I think they like echo chamber में बात करने से कोई point ही नहीं है. And so I'm very glad that this discussion happened. So thank you for inviting me. Man, it was my pleasure. So, guys, we'll wrap today's discussion up. But once again, in the description of the podcast, it doesn't matter if you're listening to this on Spotify, iTunes, Audio Wala, or you're watching this on YouTube. I have left the links for Samarth's Twitter handle. So, all of you go follow him on Twitter. मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, बहुत बार वो ऐसी चीजें लिखेगा जो शायद आपको पसंद ना आए. पॉइंट ये है कि that's why you follow him, because it creates dissonance. Dusra, Thank you. I've also left the link of his website, and maybe today through this discussion you will realize why I am the way I am. आप लोग मेरे को बहुत बार ईमेल लिखते हो, कुशल भैया आपने ये बात बोली मुझे पसंद नहीं आई. यार मैं इसीलिए तो मैं वो कर रहा हूं. And full disclosure, I do get emails where people say, कुशल भैया आपने मेरा माइंड चेंज कर दिया इस चीज में. And you know what, Hmm. 100 गालियां खा लूंगा मुझे चलेगा for that one email that I get all the time who says, भैया आपने मेरा दिमाग चेंज कर दिया. अब मैं skeptical हो जाता हूं. And let me share one story. That one book that changed me fundamentally in the year 2000 was Michael Shermer's Why Do Otherwise Smart People Believe Weird Things. That book changed my Hmm. mind, changed my life. I mean, Michael Shermer had such a deep impact on me. I still read Skeptic magazine के जो भी piece मुझे मिल सकते हैं on and off. So, to all of you, why I tell you guys to support me in this membership model is that you literally give me strength to piss everyone off, which includes you at times, when you become a member of my podcast. So, through you and your support, I actually am able to do these kinds of discussions. Neto, right now, I should be, you know what? I should be doing what that image said in the current news of the day, but I don't do it. I try to get away from the trend, is because I want to call guests like Samarth, and this gives me happiness. नहीं तो मैं 1 घंटे में भी चीजें wrap up कर सकता हूँ. आज podcast 2 घंटे की हो गई, because I genuinely enjoyed this. So to all of you who already support me, I thank you from the bottom of my heart. If even if you subscribe, even if you like this video, that also makes an help. But if you can become a member on YouTube, go on Patreon, or buy the merch, or send your donations to UPI, and also support people like Samarth. It does not matter if they are left wing, right wing, upar ka wing, niche ka wing. Do it. I'll see you guys next time. Until then, namaste. Take care. Bye bye.